Welcome students to RN Classes YouTube channel. So I'm back with the paper discussion of IOQM mock test number 3. 30 questions, 180 minutes and 100 marks in total. So 30 questions में 10 questions are of 2 marks, 10 of 3 marks and 10 of 5 marks. भाई ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर फंडे तो करे होंगे, सारे नए क्वेश्चंस होंगे. So straight away, jumping on to question number 1. Let's get on with it. Now he says write the sum of digits of a 4-digit number which is the perfect square, such that its first 2 digits are equal to each other and its last 2 digits are equal to each other. Right? First 2 are the same and then last 2 are the same. And the number is a perfect square. Now I know that any perfect square will either end with 0 or 1 or 4 or 9 or 6 or 5. Right? So that means at these two places, so unit place can be 0 or 1 or 4 or 9 or 6 or 5. Right? So let me start with the 0, 0 case. Right? Because if this is 0, this has to be 0. Condition is given. Now, first 2 digits are equal. So that means, obviously it cannot be 0, 0. It can be 1, 1. No, I know this is not a perfect square. Right? Because the thing is, it's 0, 0. So that means it would be a square of like 30 square or 40 square or 50 square. Right? Now, 11 is not a perfect square. Right? 12, 22, again, not a perfect square. 33, no. 4, 4, no. 5, 5, no. 6, 6, no. 7, 7, no. 8, 8, no. 9, 9, no. These are anyways rejected. I don't even need to check it. Right? So that means my 0 case is done. Now let me take 1. Right? Now mind it, I know it's a perfect square question, right? In class 10, we have studied that any squared quantity is either of the form 4k or 4k plus 1. Right? The number which has 1, 1, that means it is of the form 4k plus 3. Right? Definitely this number cannot be a perfect square. Done? So that means even 1, 1 is rejected. So let's come to 4. Right? This I need to check. So first, obviously, I'll check for 1, 1. It's not. Then you can check 2, 2, 2. Again, it is not a perfect square. Then 3, 3, 4, 4, not a perfect square. 4, 4, 4, 4. This is definitely not a perfect square. Then 5, 5, 4, 4, not a perfect square. 6, 6, 4, 4. You need to check these. Not a perfect square. 7, 7, 4, 4. You will realize it that this is nothing but 11 into 8. 88 whole square. Right? So that means this is the required number. He says write sum of digits will obviously be 22. A covered box is made up of from a rectangular piece of tin, shown in the figure जैसे दिया हुआ है, by cutting out the shaded region and folding along the dotted line. Okay. Rectangle is 8 inches by 16 inches. A box बोल दिया, मतलब कि I have to consider कि भाई जब मैं फोल्ड करूंगा डॉटेड लाइंस पे, ये देखो डॉटेड लाइंस दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी डॉटेड लाइंस, राइट? मैंने मार्क भी कर दिया. डॉटेड लाइंस पे मैं फोल्ड करूंगा तो इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड. राइट? नाउ क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम दे दिया 30 cubic inches. ठीक है? हाउ मेनी वेज दिस गोल कैन बी अचीव्ड? अब क्योंकि यहां पे वेरिएबल दे दिया है x, ठीक है, तो x की वैल्यूज आएंगी कुछ. ठीक है? यू हैव टू चेक 2 थिंग्स. 1, बॉक्स बनना चाहिए. 2, उसका वॉल्यूम भी 30 होना चाहिए. दोनों चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. ये नहीं है कि बॉक्स बन गया वॉल्यूम 30 नहीं आया. आई डोंट नीड दैट. वॉल्यूम 30 आ गया, बॉक्स ही नहीं बन रहा. ठीक है? तो भी नहीं चाहिए, बॉक्स बनना भी चाहिए और साथ में वॉल्यूम 30 भी आना चाहिए. ठीक है? सो वॉल्यूम की बात करिए तो मैं वॉल्यूम पे इक्वेशन बना देता हूं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ऑल गुड? सो वॉल्यूम निकालना है, लेंथ चाहिए. अब अगर आप लेंथ देखो रेक्टेंगुलर शीट की तो मेरे पास आया 16 इंचेस, एज यू कैन सी इट ओवर. ठीक है? डॉटेड लाइंस पे फोल्ड किया तो अगर आप देख रहे होगे तो ये लेंथ चाहिए मुझे. ठीक है? बट टोटल इज 16. तो मैं एक काम करता हूं, यहां से लेके यहां तक की पहले लेंथ निकाल लेता हूं.
ये इक्वल हाउस में डिपेंडेंट है, ठीक है। सो 16 है, ये भी 8, ये भी 8, वंडरफुल। और यहां पे मेरे पास x है, तो ये कितना आ गया, 8 माइनस एक्स। लेंथ इज 8 माइनस एक्स, सीधा दिख रहा था, ठीक है। अब ब्रेड्थ की बात आ जाती है। ब्रेड्थ इज 8 दिया हुआ है, इधर x सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी x सब्ट्रैक्ट किया, तो बीच वाला पार्ट, ये देखो यहां से लेके यहां तक, इट विल बी फॉर्म्ड एज 8 माइनस 2x, दिस इज द ब्रेड्थ। 8 माइनस 2x इज द ब्रेड्थ। जब फोल्डिंग करी तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट, ये भी ऊपर जाएगा, इसके ऊपर नहीं, फोल्ड होगा 90 डिग्री पे। जब मैं फोल्ड करूंगा इट विल फॉर्म अ बॉक्स। सो हाइट आ जाएगी मेरे पास अगेन, राइट। सो वॉल्यूम मैंने निकाल लिया अपनी तरफ से, ठीक है, इन वेरिएबल एक्स, एंड वॉल्यूम मुझे दिया भी हुआ है 30। अब किसी ने ये इक्वेशन बनाई और देखा इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, 3 वैल्यूज आएंगी एक्स की, तो भाई कितने वेज हो सकते हैं, देयर विल बी 3 वेज इन विच द वॉल्यूम कैन बी 30। बट आपने ये चेक किया, क्या हर 3 वेज में बॉक्स बन भी रहा है या नहीं बन रहा? बॉक्स बनाना भी तो है। सपोज करो x की वैल्यू आ जाती है ना, x की वैल्यू आ गई 8, यहां पे x 8 ही आ गया, विच इज द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द टिन शीट। तो क्या मेरी ब्रेड्थ पूरी की पूरी, अगर मैंने x ले लिया और पूरा का पूरा ही फोल्ड कर दिया, बॉक्स बनेगा? नहीं बनेगा। सो ये ध्यान से, x की वैल्यू इतनी रखनी है कि बॉक्स बने भी। तीनों वैल्यूज x की निकाल लो एंड लेट्स चेक इट कि बॉक्स बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। सो 8 को पहले मल्टीप्लाई किया 64, और जब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आई एम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, 8 टू 16 माइनस 16x, फिर माइनस x को मल्टीप्लाई किया माइनस 8x, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू, राइट। सो यहां आ गया 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 64, और x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 30। सो मैं x को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। सो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, एंड आई कैन फाइंड आउट कि भाई 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल के डिवाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 पे चला जाएगा वो, यहां पे x क्यूब रह गया, माइनस कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 12 टाइम्स, और यहां पे 2 से डिवाइड किया 32 टाइम्स, माइनस 2 से डिवाइड किया 15 टाइम्स। सो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। आई गॉट अ क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 15, एक्स लिखा ही नहीं, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये तो बिल्कुल छोटा सा फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी 9th में किया हुआ है। तो x की पहली वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। तो पुट x एज 1, पुट करके देखो, नहीं आएगा। -1 पुट करो, नहीं आएगा, 0 बन ही नहीं रहा। 2 पुट करो, नहीं आ रहा 0। -2 पुट करो, नहीं आ रहा 0। 3 पुट करो, आएगा। देखो कैसे आ रहा है, पुट x इक्वल टू 3, आई हैव टू चेक कि भाई 0 बन भी रहा है या नहीं। सो 3 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 12 इंटू 9 108, 32 into 3 that is 96 minus 15. So this entire answer is 0. So मैं यहां से सीधा फैक्टर थ्योरम से बोल सकता हूं x minus 3 is a factor. So अब मैं इसको सिर्फ डिवाइड कर देता हूं, काम खत्म। x minus 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 15 इक्वल टू 0 क्यों आएगा, ये तो मैं सीधा फैक्टर्स निकाल रहा हूं ना, राइट। x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी x क्यूब माइनस, अब 3 से करा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर आ गया, ये गया, साइन चेंज हुआ, यहां पे आ गया -9x। यहां पे साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान से कहीं गड़बड़ ना कर देना 11th वालों भाई, ध्यान से, ठीक है। सो
x को फिर से किससे मल्टीप्लाई करूं, -9 टाइम्स x से, -9x², so minus into minus plus 27x, ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे कितना आ जाएगा 5x -50, ठीक है। फिर x को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो आई गॉट 5x², ना 5x आ जाएगा -15, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, सो दिस रिमाइंडर बिकम्स 0। नाउ मेरे पास फैक्टर फॉर्म में आ गया x-3 इनटू, यहां पे आ जाएगा मेरे पास x² -9x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट वन इज 0, x इज 3, मतलब कि मेरे को x की एक वैल्यू मिल चुकी है 3, अभी चेक कर लेंगे उसको। दूसरी वैल्यू आ रही है x² -9x प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। आई विल डू इट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट्स फाइंड आउट d फर्स्ट, b square that is 81 minus 4 into a that is 1 and c that is 5, so d is equal to 81 minus 20 that is 61, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई -b और यहां पे -9 था तो +9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac जो d होता है दैट इज 61, वो मैं निकाल चुका हूं, डिवाइडेड बाय 2a 2 into 1। सो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई 9 प्लस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2, एंड यहां पे आ गई x इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2। आई गॉट 3 वैल्यूज। नाउ आई हैव टू चेक क्या ऑल द 3 वैल्यूज के लिए मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। व्हेन आई टेक x एज 3, विड्थ बन रही है 8 - 2x को चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 8 - 2x में मैंने विड्थ को चेक करना है, ठीक है। अगर विड्थ आ रही है तो लेंथ तो आई जाएगी, वो 8 - x है, ठीक है। सो 8 - 2x पे चेकिंग कर रहा हूं मैं, 8 - 6 विड्थ इज 2 हो सकती है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके लिए चेकिंग करता हूं, विड्थ को देखना है 8 - 2x। अब मैंने x की जगह रखा 9 प्लस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2। 9 से तो बड़ा ही नंबर है, 9 2 से कितना हो जाएगा 18। 8 - 18 विड्थ किस में आ रही है, नेगेटिव नंबर। विड्थ ऑफ अ बॉक्स नेगेटिव नंबर हो सकती है, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब कि ये x की वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी, ठीक है। x की एक वैल्यू मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू नहीं। 9 माइनस रूट 61 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट चेक करना है। रूट 61 49, अगर मैं इसको 7 के करीब भी मान लू, ठीक है, रूट 49 भी मान लू, आई एम जस्ट चेकिंग इन माई हेड। 9 माइनस 7 दैट इज गोइंग टू बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, x इज अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि बहुत क्लोज है, कॉन्ट्रोडिक्शन वो नहीं डालना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 से कम ही होगा, तो मैं हायर ऑर्डर नंबर भी ले लेता हूं 2। तो विड्थ 8 - 2x पे सोचा, 2 भी कर दिया, बड़ा नंबर ले भी लिया मैंने, ठीक है, नंबर बड़ा ले भी लिया, तो मैं इसको क्या करूंगा, 4 आ गया, 8 - 4 दैट इज 4, विड्थ यहां पे कंसिडर हो रही है, तो x की दूसरी वैल्यू भी आ रही है। x की दो वैल्यूज के लिए इट सैटिस्फाइज, ठीक है, बॉक्स बन रहा है। वॉल्यूम तो 3 के लिए बन रहा है, वॉल्यूम तो 3 के लिए बन रहा है, बट बॉक्स 2 पे ही बन रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर एंड हाउ मेनी वेज दिस गोल कैन बी अचीव्ड? 2 वेज, 0 2। इतना छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करने में इतना लंबा टाइम लगाया, आपको उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने डी चेक किया, डी पे भाई ये ज्यादा बड़ा नंबर बन रहा था, ये छोटा नंबर बन रहा था, सीधा टिक मारा कि भाई दो ही वैल्यूज आ रही हैं, सो सॉरी हैव टू गो अप, ठीक है। तो 0 2 इज द आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन था, राइट। Question number 3. In triangle ABC, BC is divided by P and Q in the ratio BP ratio PC in 2:7. पहले तो सिर्फ फीड कर रहे हैं. And Q divides PC in the ratio 3:4. R is the midpoint of AQ. RS is the median of triangle ARP. Area of triangle ASR is 5. Write the area of triangle ABC in centimeter square. ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना दी एबीसी
और उसने बोला पी एंड क्यू में डिवाइड कर दिया बीसी को इन द रेशियो 2:7। इसका क्या मतलब बनता है? जो बेस है ना, ये बीपी और ये टोटल पीसी, ये डिवाइडेड है जी, ठीक है। किसमें? 2:7 में, मतलब कि मैं इसको 2x ले सकता हूं और इस पूरे को 7x ले सकता हूं, राइट। बीपी रेशियो पीसी का मतलब यही होता है। और गुड है यहां तक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। उसने बोला Q डिवाइड्स पीसी इन द रेशियो 3:4, मतलब कि अब PQ QC सेम ऑर्डर में, Q डिवाइड्स PC, तो P से चलेंगे 3:4, वहां पे बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो 3:4 में टूटा, तो मतलब कि मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूं, और यहां पे ये टोटल 7 दे ही रहा है, तो मैं सीधा लिख दूंगा दिस इज 3x एंड दिस इज 7x। अगर वो सेम नहीं देता तो मेरे को y में लेके करना पड़ता और फिर वापस x में चेंज करना पड़ता, बट सब कुछ दिया हुआ था और ये 7x लिख दिया गलती से मैंने, ये 4x होना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी करेक्ट इट। सो ये आ जाएगा मेरे पास 4x, ठीक है, ये 4x करना पड़ेगा, तो टोटल 7x ही बन रहा है, बिल्कुल सेम वही बन रहा है। इजी था क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद उसने एक चीज बोली, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। R AQ का मिड पॉइंट है, मतलब कि PR मीडियन आ गया, तो मतलब कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। एंड RS इज द मीडियन, RS इज द मीडियन, मतलब कि ये S डिवाइड करेगा, S वुड बी द मिड पॉइंट, जैसे R मिड पॉइंट वैसे S मिड पॉइंट। ये दोनों चीजें मैंने मार्क कर दी, ठीक है। उसके बाद बोला इन ट्राइंगल ASR, बीच में ही लिख देता हूं, दिस इज गिवन टू बी 5, सर्कल कर दिया, ठीक है, दिस इज गिवन टू बी 5। सो ASR, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, मतलब कि मैं एरिया की बात कर रहा हूं। ASR इज 5 एंड अगर S मिड पॉइंट है, RS मीडियन है, तो मैं सीधा कह सकता हूं ये भी 5 ही होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो मतलब कि मेरे पास ASR के साथ PSR भी 5 आ गया। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, कॉन्ग्रुएंट नहीं, एरियाज इक्वल होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 एक चीज तो चल गई। अब अगर आप ट्राइंगल देखो APQ, ये स्टेप 1, ये देखो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप 1, ये आपको पता रहे स्टेप 1 में मैंने ये काम किया, ठीक है। अब देखो मैं स्टेप 2 कर रहा हूं, नेक्स्ट ट्राइंगल उठाऊंगा, ध्यान से देखना कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। APR, ट्राइंगल APR को देखो, ठीक है, APR मैंने इसलिए लिख दिया। PR मीडियन है, अगर PR मीडियन है तो इस ट्राइंगल का एरिया, पूरी ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, कौन सी? ART, इसका एरिया कितना बना? 10, वंडरफुल। अगर ये 10 बन गया तो मतलब ये भी 10 ही होने वाला है, मैं यहां पे 10 मार्क कर रहा हूं, ठीक है। सो मतलब कि ART तो QRT भी 10 ही होगा, ये 10 तो ये भी 10, टोटल 10 आ गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद पूरी ट्राइंगल का एरिया कंबाइन कर सकता हूं, ट्राइंगल APQ, पूरी ट्राइंगल का एरिया 10, 10, 20। ये पूरी ट्राइंगल का एरिया मुझे मिल चुका है, मैं पूरा का पूरा यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज 20, सर्कल कर दिया, राइट। बाकियों का एरिया लेना है, ध्यान से देखो, बेस डिवाइडेड है, हाइट तो सेम ही है भाई, हाइट सेम है, बेस डिवाइडेड है। देखो 3 पार्ट्स में बेस डिवाइडेड है, हाइट सेम है, ए से ही परपेंडिकुलर गिराने वाला हूं मैं, हाफ बेस इनटू हाइट का यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व। रेशियोज का यूज कर लेते हैं, सीधा सीधा है। स्टेप 3 किस ट्राइंगल की? ABP। मेरे को चाहिए इसका एरिया, क्या आने वाला है? हाफ। बेस कितना है मेरे पास? 2x, और हाइट A से परपेंडिकुलर गिरना है, H ले लो, राइट। इसी के नीचे लिखूंगा मैं कौन सा? APQ, APQ, राइट। इसका भी क्या होगा? हाफ। बेस आया मेरे पास 3x, हाइट आई मेरे पास h, डिवाइड कर दो, बस चीज है। AP भी मुझे चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं ABP, सॉरी, ABP, ओके, APB लिख लो या ABP लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, चेंज नहीं करेंगे। ABP लिख लिया। APQ
एबी की तो है मेरे पास 20। लो जी, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एच से एच कैंसिल, मेरे को यहां से एरिया एक मिल गया ए बी टी विच इज 20 ऊपर चला गया 40/3। देखा बंदा, राइट। अब एक स्टेप और, स्टेप 4 सेम रेशियो की बात करूंगा, इवन इजियर बना लो। ये मेरे पास अब कितना आ गया 40/3। ये बेस 2x है, ये बेस 4x है, तो ट्वाइस हो जाने वाली है। वैसे सीधा का सीधा 80/3 भी लिख सकते हो। अगर किसी को डाउट है, सेम रेशियो ले लो ना भाई। अब मैं एबीपी के साथ ही करूंगा सो दैट मेरे पास सीधा आ जाए। ठीक है, एबीपी एंड एसीक्यू। ठीक है, हाफ बेस इज 2x, हाइट इज h। ठीक है, एसीक्यू है, सॉरी। सो हाफ बेस अब मेरे पास 4x है इस साइड में, 4x इंटू h। ये कैंसिल इससे हुआ, ये कैंसिल इससे हुआ, ये कैंसिल इससे हुआ, और यहां पे मेरे पास एबीपी ऊपर पड़ा ही हुआ है 40/3, और यहां पे एरिया आ गया मेरे पास ए सी क्यू। ये देखो ध्यान से, 4 पे काट रहा हूं, वो ऊपर चला जाएगा ए सी क्यू। मेरे पास कितना आ गया 80/3। देख लो। स्टेप 4, ये 80/3। क्या करना चाहिए मुझे एबीसी के लिए? यहां लिख रहा हूं इधर को, एबीसी के लिए सबको ऐड कर दो, 20/3 प्लस 20 प्लस, नो सॉरी 40/3 था, आई एम सो सॉरी, ये 40/3 था, इसको बता देते हैं 40/3। ठीक है, और ये एक ही बात करी थी हमने। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास 40/3, ये आया मेरे पास 20, और ये वाला कितना आया था 80/3। एलसीएम ले लो, आंसर आया 3 पे एलसीएम 40 बिल्कुल ठीक, 60 बिल्कुल ठीक, 80 बिल्कुल ठीक। तो ये टोटल कितना हो गया 180/3, दैट इज 60 स्क्वायर यूनिट्स, 60 यूनिट्स। इतना छोटा सा सीधा सा क्वेश्चन, वैसे तो यहीं पे ही सॉल्व कर सकते थे अगर किसी को स्टेप्स जानने हैं। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्लो आपको देखते हुए कि भाई आपको चीज समझ आ रही है, उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। The letter R, M and O are represented by whole numbers. Okay, whole number से represent हो रहा है। R into M into O is equal to 240. So R into O plus M is equal to 46, and R plus M into O is 64. You have to find the value of R plus M plus O. ठीक है, सॉल्विंग पे क्वेश्चन था, 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स गिवन है। मेरे ख्याल से तो सॉल्व होना चाहिए था। अब ये मेरे ख्याल से प्रीआरएमओ मुंबई रीजन्स पे होता है ना, प्रीआरएमओ तो ठीक है, प्रीआरएमओ मुंबई का क्वेश्चन है, आई थिंक 2012 और 2011, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलो, सो मैं इक्वेशंस लिखता हूं। R into M into O is equal to 240. R into O plus M is equal to 46. R plus M into O is equal to 64. ठीक है, सॉल्विंग किसके किसके बीच में करेंगे? मेरे ख्याल से 1, देखो यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे भी प्लस आ रहा है। मैं सॉल्विंग करता हूं, ठीक है, किसके किसके बीच में करी जाए सॉल्व। पुट कर देता हूं ना ये वैल्यू। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, R इंटू एम इंटू ओ यहां पे बनाए। इक्वेशन 2 को ना एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो m से, नहीं आर एम से मल्टीप्लाई करो। मेरे ख्याल से m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m इंटू आर इंटू ओ प्लस m स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस पूरे को किया तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 64m। इसकी वैल्यू तो 240 है ही, उल्ला m की तो वैल्यू ही आ गई, m स्क्वायर माइनस 64m प्लस 240 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ,
बड़ा 64 बड़ा नंबर है, चेक कर रहे हैं। 64 46 ओह सॉरी 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 सॉरी, ये 46 होना चाहिए, 64 तो बन ही नहीं रहा। मैं वही कौन दिमाग में बन ही नहीं रहा मेरे से, 46 था, मेरे का गलती तो नहीं हो गई, चेक कर लिया। 46 बन रहा 46 बन रहा है, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हो, फ्लिप हो गया मेरा, ठीक है। 46 बन रहा है, 40 एंड 6 यार तोड़ो सीधा, m माइनस 40 m माइनस 6 सीधा लिख सकता हूं इक्वल टू 0। m की दो वैल्यूज आ सकती हैं, m कैन बी 40 और m कैन बी 6, दो वैल्यूज आ गई मेरे पास m की। चेक कर लेंगे अभी किस पे आंसर आएगा। सेम इक्वेशन 3 यहां पे कर देता हूं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय RMO बनना है ना, तो R बना लो R से, ठीक है। तो R स्क्वायर R इंटू M इंटू O, ठीक है, 64R, ठीक है। 64R बन गया मेरे पास। तो इसकी वैल्यू 240 थी, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, R स्क्वायर माइनस 64R प्लस 240 इज इक्वल टू 0। 240 यार बन नहीं रहा था वहां पे, तो बनाए कैसे बनाए। 64 यार क्या कर रहा है, 64 से 24 बन तो रहा था, बट अगर वहां बन जाता तो गड़बड़ हो जाती, वहां पे बना ही नहीं, दिमाग ही नहीं चला। R माइनस 60 और R माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सो R कैन बी 60 एंड R कैन बी 4, ठीक है। दो R की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो मतलब कि अब मेरे को केसेस बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि RMO से निकालूंगा मैं, ठीक है। इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं यहां पे, R इंटू M इंटू O इज इक्वल टू 240। केस 1, दोनों छोटे नंबर ले लेते हैं, 4 ही केस बनने हैं। R इज 6 M ना M इज 6 R इज 4, R इज 4 M इज 6, ऐसे ही लेंगे, R को पहले कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यहां पे लिखा, तो R इज 4 M इज 6 O बन गया 240, 6 4 24, 10 आ गया, O इज 10, वंडरफुल। ये तो ठीक है, मतलब कि मेरे पास एक वैल्यू तो आ जाएगी R प्लस M प्लस O, R इज 4 M इज 6 O इज 10, ठीक है। तो 20, एक कंडीशन से मैंने एक आंसर तो निकाल लिया, ठीक है। क्या पता और भी आंसर आ जाए भाई, आईओक्यूएम का क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, R इंटू M इंटू O इज इक्वल टू 240, ठीक है। मैंने R को, ये केस नंबर 2 है, ठीक है। R को, अब मैं R से ही चल रहा हूं, 4 लिया था, तो मैं अब 40 ले लेता हूं M को, R को 4 M को 40, R फिक्स रखा, R को पहले लेके चल रहा हूं, M को चेंज करता रहूंगा, ठीक है। तो R इज 4 M इज 40 O इज इक्वल टू 240। तो ये O है, ये तो एक कैंसिल हो गया, O की वैल्यू क्या आ गई 24/16, फ्रैक्शन ही आएगी, O तो नहीं आ रहा है ठीक है। चलो सो फिर से R इंटू M इंटू O इज अगेन 240। केस नंबर 3 लिया है मैंने, R को अब मैं कंसिडर करता हूं, अब R मेरे को चेंज करना पड़ेगा, 60 एंड M is 6, तो 60 into 6 into O is 240, ये तो गया, O की वैल्यू आ गई 24/36, आंसर तो नहीं। फोर्थ केस भी यहीं कर देते हैं, जरा सा जो है, मेरे ख्याल से यहां से भी आंसर नहीं आना चाहिए, बट चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो R को अब मैंने 60 ही रखना है, M को मैंने 40 ले लिया, ये तो पक्का नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। ओ चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, अब तो दिख गया था बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ये गया, ठीक है। सो ओ एक कैंसिल हुआ, बाकी बच गया मेरे पास, ओ की वैल्यू आ गई 24/240, यहां से तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन चाहिए नहीं, क्यों,
क्योंकि मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर्स। होल नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ एक में आ रहा है, आंसर इज 20। इतना सही था। चेकिंग वॉज नेसेसरी इफ 1 by under root of 2011 plus under root of 2011 square minus 1 is equal to under root of m minus under root of n. M, n are positive integers. Write the sum of m plus n. मैं एक काम करता हूं, m और n निकाल लेता हूं या m plus n निकाल लेता हूं, ठीक है। मेरे को तो यार रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन लग रहा है, रैशनलाइज कर दो आंसर आ जाएगा, तो मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 2011 प्लस अंडर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1, तो रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर वुड बी 2011, ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे का वैसे रहेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, राइट। ऐसे ही करते हैं हम रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो यहां पे माइनस आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में किया है वही न्यूमरेटर में करूंगा, ठीक है। चलो एक चीज तो हो गई, अब क्या किया जाए। न्यूमरेटर तो भाई यहां पे इक्वालिटी लगा दी, न्यूमरेटर तो यही रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द डिनोमिनेटर, इसे देखते ही पता चल जाएगा, 2011 स्क्वायर माइनस 1, राइट। और यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मेरे ख्याल से मैं सीधा लिख सकता हूं 2011 माइनस, ठीक है, क्योंकि मेरे को रैशनलाइज करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट तो गायब ही हो गया भाई, रूट वैसे का वैसे रहेगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, इसका स्क्वायर माइनस 2011 का स्क्वायर माइनस 1, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। सो न्यूमरेटर वुड स्टे द सेम, 2011 माइनस अंडर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये तो ओपन अप हो गया, नहीं ओपन अप क्या, 2011 स्क्वायर माइनस, ये ओपन अप हो जाएगा 2011 स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हुआ यहां पे प्लस 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में रूट 1 आ गया, तो मेरे ख्याल से मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, मेरे पास बचा 2011 माइनस अंडर रूट ऑफ 2011 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। इतना तो न्यूमरेटर में आ गया, अब क्या किया जाए, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। टोटल मिला के मैं a प्लस बी इंटू में माइनस बी लगा सकता हूं, यहां पे निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंस। 2011 माइनस 2011 प्लस 1 एंड 2011 माइनस 1, सो 2012 इंटू 2010, कूल। अलग अलग कर लें, नहीं अलग अलग करने से फायदा नहीं होगा, एक तो 2 तो दिख रहा है मेरे को कॉमन, ठीक है, 2 दोनों में से निकलता हुआ दिख रहा है, 2011 माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1006 इंटू 2 इंटू 1005, ठीक है, यही बनेगा। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट, 2 तो बाहर आ गया, 2011 यहां पे है, माइनस 2 बाहर आ गया, मेरे पास 2 ये आ गया 1006 इंटू 1005, इसको तोड़ भी लेना चाहिए था मेरे को, तोड़ ही लेता हूं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे को रूट हटाना है, रूट हटेगा कैसे वही तो देख रहे हैं। तो 2 इंटू रूट 1006 इंटू रूट 1005, क्या किया जाए यार, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर हो जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं क्रिएट कर सकता हूं, करें ट्राई, क्योंकि 1006 एंड 1005 को अगर मैं ऐड करूं 2011 ही बनेगा, राइट। 1006 का करा स्क्वायर प्लस 1005 का करा स्क्वायर,
कंप्लीटिंग ही करनी पड़ रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा. 1006 into 1005. ठीक है. So a square plus b square minus 2ab. राइट, डायरेक्टली लिख दो इसको. देखो क्या बनता है. अंडर रूट ऑफ 1006 minus 1005 का होल स्क्वायर. हाँ, तो वो हट जाएगा, तो मेरे पास ये बच गया 1006 minus 1005, which is equal to under root of m minus under root of n. कुछ कंडीशन दी है, बहुत पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ तो दिया नहीं है. ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. सो m की वैल्यू मैंने 1006 निकाल ली, दोनों रूट में थे, और n की वैल्यू निकालनी मैंने 1005 बाय कंपेयरिंग. सो m प्लस n तो मेरे पास आ गया, कितना आया, 2011. ठीक है, m प्लस n आ गया. उसने यही मांगा था, राइट सम ऑफ डिजिट्स बोला था, सम ऑफ डिजिट्स बोला था. ठीक है, हमेशा चेक कर लिया अगर कोई मांगा क्या है. 2 plus 0 plus 1 plus 1, so this is going to be 4. आंसर इज 04. देखो, मेरे को नहीं समझ आ रहा था तो मैंने रैशनलाइजेशन से शुरू किया और तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. यहां जाके मैं फिर से फंस गया. रादर देन डूइंग 2011 स्क्वायर माइनस 1 एंड चेकिंग कि भाई ये किसी का अंडर रूट बनेगा ही नहीं यार, -1 कर दिया एक परफेक्ट स्क्वायर से, तो मैंने उसको तोड़ लिया दो नंबर्स में और उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लिया. ठीक है, रैशनलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब कि बी वेरी केयरफुल. ऐसा नहीं होना चाहिए, रैशनलाइजेशन तो होनी चाहिए भाई. राइट. He says write the number of non-congruent triangles with all sides as natural numbers and perimeter equal to 17. Right? Now, perimeter is equal to 17. That means sum of all the sides is 17. So let me consider my sides to be x, y and z or z. Perimeter is 17. That means x plus y plus z is equal to 17. Now, he says that all sides are natural numbers. So that means each of these, they belong to the set of natural numbers and non-congruent triangles. Now, when I did, I can start because I can write the solution of this equation. That is not a big deal because over the set of natural numbers. But mind it, I have to make sure that the triangle is formed, right? Now, is there a relationship between sides of the triangle and the formation of triangles? What is that one condition that has to be satisfied in order for the possibility of triangle? That is, sum of two sides has to be greater than the third one. Or in a refined way, I can say sum of the smallest two sides has to be greater than the third one. Right? So I have to make sure. Now, if I want to make cases, I have to make case of this. I have to make note of this. Now let's see. The question is, should I start with the case? Let me take x as 1, y as 1 and z as 15. Obviously, this triangle is not possible. Then I'll go to 1 to 14, stuff like that. And again, you can see that these all triangles are not possible. Right? So if I want to make a better case, what I'll do is, I will locate the highest or the longest side which is possible. Longest side of the triangle. Right? Let me say, if I take x to be 8, the sum of these two sides is 9. Right? Sum of these two sides is greater than the third one. Perfect. Right? Now, if I take my x to be 9, sum of these two sides is what? 8. Sum of these two sides is not greater than that one. So that means x equal to 9 is rejected, x equal to 10 is rejected, x equal to 11 is rejected, and so on. The longest side which is possible, that is 8. Longest side is 8. Right? So let me start with that. Now, let me take my x to be 8. Now, y plus z is 9. So, let me say, so 1, 8 I can have, right, triangle is formed. Then I can have 2, 7, 8, 2, 7, triangle is formed. Then maybe I can have 8, 3, 6, that is fine. 8, 4, 5, absolutely fine. 8, 5, 4, yes. But, he says non-congruent triangles. Clearly, these two triangles are congruent. That means, I will not take this case. Then obviously I will not take 863, 872, 881. I will not take because I have taken all of these. Right? So I have exhausted the case when 8 is the longest side. Now the longest side, it cannot be 9. Oh, I have to go in the reverse direction.
So longest side can be 7. If x is 7, sum of these two sides is 10. Right? So maybe I can have 1 9. Careful. Right. I said the longest side is 7. Here you have 9. That is not possible. Right? So maybe I can have 2 8. Is that okay? Again, no. Longest side is 7. You have 8 over here. So no. Then I can have 3 7, which is absolutely fine. Then 7 3 4, fine. 7 7 3. No, 4 6 होगा था, right? 4 6. My bad. 7 4 6 is fine. 7 5 5. That is fine. After that, the cases will start to repeat. Right? So that means longest side 7 cases exhausted. Now let's move on to longest side, that is 6. Now if x is 6, sum of these two sides is 11. So obviously I cannot have 1 10. I cannot have 2 9, 3 8, 4 7. No, 5 6 I can have. Right? Next would be 6 6 5, but obviously congruent chain, so rejected. Right? Next, the longest side can be 5, but all of those cases have been done. Right? So that means our cases are done. How many triangles are there? 4 here, 3 here, 1 here. So that means in total 8 triangles will be possible. That is why your answer is 0 8. Alright, on to the next one. Now he says write the number of ordered pairs x, y, where x and y are natural numbers, such that their HCF and LCM is 322. Such that the sum of HCF and LCM is 322. Right? Now I need to find the number of ordered pairs. So I need to find the numbers basically. I need to find x and y. Now he says sum of their HCF and LCM should be 322. Now I don't know the HCF, right? Nothing is given in the question about their HCF. So let the HCF of these two numbers be A. Right? Good. Now highest common factor is A. Now A must be present in X and A must be present in Y. Right? Along with A, I might have something else. Along with A over here, I might have something else. Right? Now that something else, maybe that is C. And this something else, that is Q. Mind it, since HCF is A, that means highest common factor, that is A. P and Q should not have any other common prime factor. Now, if P and Q have no common prime factor, that means these two, P and Q, are co-prime in each other. Right? Now, sum of the HCF. HCF I know, that is A. We have taken that to be A. Now, LCM. Now, mind it, A is present over here, A is present over here. In LCM, A must be present, A is present. Right? Now, P is present over here, and P is obviously not present over here. That means this entirety has to come in the lowest common multiple. Because it has to be a multiple of this, it has to be a multiple of this. Now, if it is a multiple of this, that means P has to be there. Similarly, Q has to be there because I am talking about the multiple of this one. So, Q has to be there. Right? This is the least that I have to do in order to get the common multiple. That is why the LCM is APQ. Right? Now, he says sum. So, that means A plus APQ. This turns out to be 322. Right? Obviously, A is common. I get A into 1 plus PQ. That is equal to 322. Right? I need to solve this equation. Mind it, I have a big condition. Why? X and Y are natural numbers. That means A has to be a natural number. That means P has to be a natural number. Q has to be a natural number. I need to solve this equation over the collection of natural numbers. My equation is A into 1 plus PQ. That is equal to 322. This is a natural number. This is a natural number. Product of two natural numbers is 322. I can write 322 as product of two natural numbers. That's not a big deal. Right? So, first case I can take, that is 1 into 322. Right? Second case, that is 2 into 161. Then 7 into 46. Then 14 into 23. 23 into 41. 23 into 14, of course. Right? And 46 into 7. 161 into 2. 322 into 1. Hardly some cases are there. Let me see what is happening in the first case. Now, in the first case, I have A is equal to 1, absolutely fine.
then 1 plus PQ, that is equal to 320. That means PQ is nothing but 321. Again, this is a natural number, this is a natural number. Product of two natural numbers is 321. Hardly any guesses. In fact, I will give just 4 guesses. 1, 321, 3, 107, then 107, 3, 321, 1. Right? Since I am talking about the ordered pairs, ordering matters over here. Right? So that is why I take all of these. From here, I am getting 4. Right? So, when P is equal to 1, Q is equal to 321, I know that A is equal to 1. One ordered pair I get, I can see because one ordered pair is 1 into 1, AP, right? Second number is A into Q, so 1 into 321. First ordered pair, right? From here, I got one ordered pair. Second, A into P, so that is 1 into 3. Second number is A into Q, so that is 107, 1 into 107. Second order pair, so second order pair. Similarly, I get third order pair, then fourth. That means from these 4, I am getting 4 order pairs. So I will write 4 order pairs. Let's see in the second case. Right, this case is done. Second is A is 2. Then 1 plus PQ is equal to 161. So PQ in turns out to be 160. Right, natural numbers, product of two natural numbers, 160. Now, I will have cases like 160, then I have 280. Now, careful. 2 and 80. P, 2, Q, 80. Mind it, I said that P and Q are co-primes. Right? Because if they do have a common prime factor, my HCF will change. Now, 2 and 80 obviously have a common prime factor, which is 2. So that means this cannot be the case. Rejected. Second, I have 4 and 40. Again, common prime factor is there, so rejected. Then I have 5 and 32. No common prime factor, I'll take it. Next is 8 into 20. Common prime factor is there. 10, 16, common prime factor, and so on. Next I'll get 32 and 5. Then obviously I'll get 160 and 1. Right? From this I'll get one order pair, second order pair, third, fourth. So again I'll get 4 more. Right? In similar lines you can exhaust from this one. You will get 4 order pairs from here. You will get, okay, 4 is, A is equal to 46. Yeah, 4 from here, 4 from here, okay, 4 from here, and 1 from here, and 0 from here. Right? On similar lines, you can exhaust it. And he says total number of order pairs, if you add these up, the answer for this question will turn out to be 20. Alright, on to the next one. Now he says if this ratio is equal to minus 5 by 3 and then this ratio became, then find the value of 35 here. So basically I am interested in the value of this ratio. Now in order to find this, first of all I'll obviously try to understand what this is saying. So I have no option. What I do is I'll just open them now and let's see what happens. Now if I multiply this 2, I will get AC minus AD minus BC plus BD whole divided by, and then I will do BD minus AB minus CD plus BC equal to minus. Right? This is given to us, and if I need to find the value of this, so let me just simplify it and see what I need to find out. So I will get AB minus AD minus BC plus BD whole divided by AC minus AD minus BC plus BD. Right? This is something that I am interested in. Now, if I look carefully, I can see similar terms coming in the numerator as well as denominator. Let me see. AC is here, AC is here. BD is here, BD is here. Right? AD and BC, obviously here we do not find AC. So, if these two similar terms are coming again and again, that means there has to be some reason for it. So, what I will do is, I will try to isolate AC plus BD. I'll try to do that. Right? When I isolate, I get a relation between, I get this relation, I'll write it down directly. I get 5 into AB plus CD plus 3 into AD plus BC by B. I get this relation. Now, let me see what is happening here. Now, I have found out the value of AC plus BD. Let me see whether I can have AC plus BD over here or not. So, in the numerator, I cannot find that. But in the denominator, I have AC plus BD.
So what I do is, I will get the value of AC plus BD. From here, I'll just substitute over here. As soon as you substitute, terms will get cancelled out. In fact, K turns out to be, I will just write it directly, K turns out to be 8 by 5. Because you will get the similar terms and you will get 8 into thing, divide by 5 into thing, and this is the same obviously, and you will get, and it will get cancelled. That is why K will turn out to be 8 by 5. Hence, the answer will be 56. Alright, on to the next one. Now, he says ABCD is a trapezium. So, let me have my screen. But, before that, AD being at right angle to AB and AD is actually perpendicular to AB as well as C. So, I will make the trapezium accordingly. So, suppose my trapezium looks like this. Alright, so this is A, B, C, D. Right, now he says that AD is 10, so this length is 10. BC is 8, so this length is 8. Now he says, and diagonals BD and AC cut at 90 degrees. Alright, so diagonals cut at 90 degrees. Right, so this angle is 90. Now, and again I'll mark this 90, this 90. Since it's a geometry question, I would advise please write all of these things in your diagram. Right, now he says write the value of 2 by 5 into area of ABCD, which is trapezium. That means indirectly I need to find the area of trapezium. Now I know that area of trapezium is nothing but half into height into sum of parallel sides. Right? Now let's see what do I know. Do I know height of the trapezium? Answer is yes, because I already know this length, which will be the height of the trapezium, which is 10 into sum of parallel sides. Obviously, this and this are parallel, right? 90, 90. Now, that means I want this plus this. This plus this one, so already I know this one, which is 8. Plus, now the other parallel side is 8. That means I can find the area of trapezium provided I know this length 8. Right? I'm interested in this now. I'm interested in the length of a triangle. Now, the thing is, how do I get this length? Mind it, I have to make use of the fact that it is a trapezium, that this is 90, this is 90. Also, till now, I have not touched the fact that this is 90 degrees. Diagonals intersect at 90 degrees. Now, in how many different ways can I use 90 degrees? First thing that comes to my mind, that is Pythagoras theorem, right? This is also 90 degrees. I am interested in this, but for that, I need to know this length, right? Let us be O. I need to know AO, I need to know BO, right? It will be difficult to get these lengths as such because all I know is that 10 and 8. Right? Okay. So maybe Pythagoras theorem is not being applied over here. So what else can I use 90 degree for? Now, side of the triangle, maybe I can find some congruent triangles. But the thing is, I don't think I can find congruent triangles over here. Right? What kind of triangles can I actually find? If congruent triangles are not there, maybe similar triangles are there. Right? We know the ratios are fine. Now, let me find these similar triangles. Mind it, since I need to find AB, I should look for the triangles where AB is the side, right? So, I can have ABD. ABD. Right? Let me consider this triangle, right? First of all, AB is involved. Secondly, 90 degrees involved. Right? So many 90 degree right angle triangles are there, right? So, obviously, I will choose the right angle triangles because I need to go for similar triangles. So let me consider triangle ABD. I'm not writing the corresponding parts, I'm just considering it. And the second triangle that I can consider. Now I know AD, I know DC. Right? Both of these lengths I need to accommodate. So that means maybe I can use this triangle ABC. Right? So I've considered this one and I've considered this one. Let me say that these two triangles are similar or not. Obviously this is 90, this is 90. One angle is fine. Now the second angle I need to correspond. How do I go to the second angle? Alright, let me start from somewhere. So, in this triangle, let me start with this angle. Let this be theta. Right? Mind this is theta, this is 90, this is 90 minus theta. The entire is 90, this is 90 minus theta, that means this is theta. That means theta is present in this triangle and theta is present in this triangle. So, that means this triangle is actually similar to this one. Right? Two angles are equal. So let me write the corresponding parts now. So triangle ABD is similar to triangle. Now corresponding to A, I will have B. Corresponding to B, I will have A. So DAC. Done.
obviously I need AB, so let me write AB by DA. DA is nothing but is equal. Now I will write that side which I know, BD. Now BD I do not know, so I will not touch it. AD, let me check. AD. AD again I know that is 10. Divide by DC, which again I know that is. AB is nothing but 25 by 2. Right, just substitute it and you will get the answer. The answer for this question is 41. Alright, so the next question is if M is the average value of absolute value of A1 minus A2 plus absolute value of A3 minus A4 over all permutations of A1, A2, A3, A4 over 1, 2, 3, 4. Right, then write the value of 9M. Clearly I need to find the value of M. Right, now he says M is the average value of this over all permutations. Now average is what? Sum of all observations divided by total number of observations. Now total number of observations, now he says over all permutations of A1, A2, A3, A4 over 1, 2, 3, 4. Right? So I have four distinct numbers, four distinct objects. So in how many ways can I do that? I can do that in 4 factorial ways, or you can say 24 ways. Right? So total number of cases, in this case that is 24. If I want to find the value of M, I need to find the sum of all the cases. Right? So let me just try to start the question. Now, he says absolute value of A1 minus A2 plus absolute value of A3 minus A4. So let me just write the cases. Right? Permutations. Let me take A1 as 1, A2 as 2, A3 as 3, A4 as 4. In that case, that will be mod of minus 1, which is 1, plus mod of minus 1, which is 1. Again, in this case, the sum would be 1 plus 1, which is 2. Right? Now, permutation. So, let me take A1 as 1, A2 as 2, A3 as 4, and A4 as 3. In this case also, this is 1, this is 1, this will become 2. Right? What else? So, 1, 2 are exhausted. So, let me take 1, 3. Then I can take 2, 4 here. Right? Mod of minus 2, that is 2. Mod of minus 2, which is 2. Sum would be 4. Right? Then 1, 3, 4, 2. Sum is again 4. Right? Then 1, 3 exhausted. 1, 4 I can take. Right? So this is 2, 3. In this case, 3 plus 1, which is 4 again. Then 1, 4, 3, 2. Sum is 4 again. So I've exhausted all those cases where A1 is 1. Right? The sum in this case, that is 1, 2, 3, 4, 5, that is 20. Right? Now, if you write those cases where where A1 is 2, the sum will again turn out to be 20. Right? So, 20 plus 20. When A1 is 3, again it will be 20. When A1 is 4, again it will be 20. Right? These are the all cases possible. As you can see, because 6 plus 6 plus 6 plus 6, that is 24, which we have already written. So, this is nothing. This is the value of M. Just multiply by 9, you'll get the answer, which is 30. Alright, on to the next one. He says factorize this polynomial into 2 quadratic factors with integral coefficients and leading coefficient equal to 1. Okay. Write the sum of squares of the coefficients of the linear terms of the quadratic factors. Now he is talking about the linear terms of the quadratic factors. If I can guess the quadratic factors, I can find the answer. Right? Now, I need to factorize this. X raised to 4 plus 11x cubed plus 14x squared plus 13x minus 21 into 2 quadratic factors. And leading coefficient is 1. Right? So, that means here, if I have x squared, here I will have x squared. Mind that the quadratic factors have integral coefficients. Right? So, whatever the case may be, these coefficients have to be integers. Now, mind it, coefficients integer. Now, you can say, ma'am, write plus ax plus b, then plus cx plus d. Wait a second. I know that integral coefficients are there and the constant term is minus 21. Right? So, if the constant term is minus 21, here possibilities are what? I can write plus 1 minus 21. Right? Because I can write minus 21 as product of 1 and minus 21. Right? So, here, then I can take my linear term to be ax and the linear term to be bx. I've reduced my number of variables because solving linear equations in 4 variables will be a little bit complicated. Right?
Now, and it might not be solved, that is also the case, right? So, this is a polynomial, left hand side is a polynomial, right hand side is a polynomial, right? You'll compare the coefficients and you will try to get the value of A and B. Now, what will happen when you try to compare the coefficients? You will get three equations. Why? Because you will compare the coefficient of x cube, you will compare the coefficient of x square, you will compare the coefficient of x. Right? Actually, let's try to do that. So, coefficient of x cube, here obviously it is 11. And here I can write the b plus a. So, that is a plus b. Right? Coefficient of x square, here it is 14. And here the coefficient of x square is minus 21 plus ab plus 1. Right? So, this is minus 20 basically. Minus 20. So, basically, AB turns out to be 34. Right? And last, coefficient of x, here it is 13, which is equal to minus 21a plus b. Right? Now, you can see that this is a linear equation in two variables. This is a linear equation in two variables. You can solve it and get the value of a and b. But mind it, all the three equations have to be satisfied. So whatever value of a and b you get, you have to check whether this equation is satisfied or not. In fact, for this case, it will not be satisfied. What does that mean? If you cannot find the value of a and b, that means your breakup of constant term is not correct. But it's fine, it's fine. So you can check 1 and minus 21, you can check for minus 1 and plus 21. Which you can see is also not the case, because rearrange the terms here, you will realize that is not the case. Now, 21, 1 and 21, what are the factors? 3 and 7. So, I can do plus 3 and minus 7. I think for this you will get the answer. Compare the coefficients, get the value of a and b, and check whether the third equation is satisfied or not. That means you will get the answer for a and b. You can write this sum of the squares of coefficients of linear terms. That means you need to write sum of the squares. So, a square plus b square, you need to write this. This answer turns out to be 85. So, if you have a bi-quadratic polynomial, you need to factorize into quadratic factors of integral coefficients. This method of factorization can be used. Because as you can see, I am unable to guess straight away what can be the roots of this, and unable to guess or observe any kind of factorization technique. But this technique is also very important when you suppose the quadratic factors. The integer from 1 up are written in a triangular array. मतलब कि ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई, ठीक है, ये लिखना. Where rows n contains n numbers, so that 0 in the first row, 1 and 2 in the second row, and so on. What is the number of row? Okay, so let the number of rows be n. Contains 2 0 to 1. ओके, मतलब कि ये क्वेश्चन पैटर्न रिकॉग्निशन पे है. अगर आपने पैटर्न ठीक से सोच लिया, आ गया. अब ये मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, जैसे हम आईयूक्यूएम देते हैं वैसे उनका भी होता है. वहां से उठा लिया हमने क्वेश्चन, ट्रायंगुलर नंबर्स पे दिया हुआ था उन्होंने क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा ट्रायंगुलर एरे पे. ठीक है, चलो अब वेयर n कंटेन्स n नंबर्स. ठीक है, चलो दिस इज द फर्स्ट रो, देखते हैं क्या होता है. This is the second row, this is the third row, this is the fourth row, this is the fifth row. Okay. इसके बाद नंबर्स क्या बनेंगे? 15, 16, 17, 18, 19, यहां पे बनेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7. अब यार 2021 तो बहुत बड़ा नंबर है यार, यहां तक तो काउंटिंग हो ही नहीं सकती. इतना थोड़ा ना काउंट कर डालेंगे, तो मतलब कि पैटर्न देखना पड़ेगा. ठीक है, चलो देखते हैं. फर्स्ट रो मेरे पास सिर्फ 0 आया. सेकंड रो में मेरे पास 1 आया. मैं ट्राई कर रहा हूं कि मेरे पास ये बन जाए. ठीक है, देख रहे हो, मैं ये चीज कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर मेरे को इनिशियल नंबर मिल जाए, रो का फर्स्ट नंबर ही मिल जाए, मैं देख लूंगा 2021 कहां पे आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट पे 0, सेकंड पे 1, थर्ड पे 3, ओके, फोर्थ पे 6 हो गया, ओ बढ़ गया, फिफ्थ पे
10। मेरे को यहां पे पैटर्न बनाना है, 6th और 7th पे पैटर्न लगा के आंसर निकालना है, ठीक है, कि 15 और 21 बने। ओके, यहां पे 0, मतलब कि फर्स्ट पे 0 आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, ठीक है, थर्ड पे 3 आ गया, 6 आ गया। ये तो 1, 3, 6, 10 तो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। 3 कैसे बन सकता है? 1 + 2 से। 6 कैसे बन सकता है? 1 + 2 + 3 से। ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर नंबर 6 क्लास 8th। 6 बन सकता है यहां से। इसके बाद 5th रो में 10 बना, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, सो यहां पे सिर्फ एक सिंगल 1 ही रह गया। फर्स्ट रो पे तो नहीं पता चला, सेकंड रो पे भी नहीं दिखेगा। थर्ड रो पे मैंने 3 बनाना है, और 1 और 2 का यूज कर सकते हैं, राइट। और यहां पे मैंने 6 बनाना है, 1 2 3, 6 बन गया 1 2 3 से। सो ये तो होता है n × n + 1/2। अगर मैं कर दूं तो 3 × 4 12/2। एक्चुअली जो हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं वो तो इससे बनते हैं, n × n + 1/2 से हम सीधा सीधा नंबर लिख लेते हैं। बट ये तो 4th रो के लिए है, 3rd रो के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने n को 3 रखा। तो नहीं बन रहा भाई, क्योंकि ये बन तो जाएगा। n को अगर मैं उल्टा कर दूं, n को 4 रखना है, देखो ये 3 बना और ये 4 बना, राइट। दूसरी वाली में जब मैंने n × n + 1/2 किया, तो इसको रखा मैंने 4 और इसको रखा मैंने 5, तो हो रहा है, राइट। बट मेरे को तो 4 और 5 के लिए चाहिए, n को 5 रखना पड़ेगा। n को 5 रखना है, एक काम करो, इसका पैटर्न चेंज कर दो, n × n - 1/2 कर दो। इससे यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा। तब भी 4 3 से 12/2 6 ही देगा। अगर मैं यहां पे n × n - 1/2 करूं, इसको मैंने 5 रख दिया और इसको मैंने 4 रख दिया, चल रहा है। 5 × 4 20/2 10। n × n + 1/2 तुमने सीखा हुआ है, उसका उल्टा भी तो दिया जा सकता है। ओके, इससे ऊपर वाले में ट्राई करते हैं, n × n - 1/2 क्या मेरे को थर्ड रो दे देगा? तो मतलब कि 3 × 2/2 3 दे तो रहा है, मतलब कि n × n - 1/2 इज सक्सेसफुल। तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, n × n - 1/2 6th रो है, 6 × 5/2, तो 3 आ गया, 15 होना चाहिए। क्या 15 बन रही है? बिल्कुल बन रहा है यार, यहां पे 15 ही तो है, बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर से चेक करो, n × n - 1/2, ये पैटर्न खुद भी बनाया जा सकता है। देखो मैंने खुद ही बनाया, यहीं पर ही देख के अभी। तो मैंने इसको रखा 7, इसको रखा 6, कम कर दिया ना, /2 पे चला गया, फिर 3 × 21। क्या ये 21 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मेरे पास पैटर्न बन गया। फर्स्ट नंबर ऑफ द रो मैं निकाल सकता हूं इस पैटर्न से, n × n - 1/2 से ये पैटर्न निकाला जा सकता है, ठीक है। अब 2021 से ये कम या इक्वल टू दोनों ले सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 2021 होना चाहिए, राइट। तभी मेरे को मिलेगा। इक्वल हो गया तो भी चलेगा, मेरे को एग्जैक्ट रो मिल गई। अगर इक्वल नहीं हुआ तो भी चलेगा। मैं लेस देन के लिए सॉल्व कर लेता हूं, इक्वालिटी का मेरे को पता चल जाएगा। फर्स्ट नंबर निकाल लेते हैं, लेस देन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वल टू पे भी चल सकता है एक्चुअली। सो मैंने इसको लिख लिया, n × n - 1 लेस देन 4042, ओके। अब ये इक्वल होता ना तो मैं क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर देता, बट हमें नहीं पता ना 4042 स्प्लिट होगा भी या नहीं। स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर 4042 नहीं आ रहा तो मेरी स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। एक काम करो, n² - n लेस देन 4042 पे चलो, ठीक है। n की वैल्यू सोच ही लो, n 4042 है ना,
n को 60 सोचो, 3600 है, गैप है अभी 61 में नहीं, n मेरे को दूसरा जो पता होता है वो है 64, दैट इज 4096, वेरी क्लोज। एक काम करता हूं 4096 पे ही ट्राई करता हूं, n की जगह मैंने 4096 रखा, तो n स्क्वायर माइनस n निकालना है, 4096 माइनस 64, 4096 minus 64 will give you 4032। अगर 64 में रखता हूं, इसका मतलब क्या बना, 64th रो का फर्स्ट नंबर मेरे को मिल चुका है 4032 नहीं है वो नंबर, यहां पे गलती कर दी क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 होना था, तो ये डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूं तो 2016, पहला नंबर मिल गया मेरे को 2016। उसके बाद मेरे को जाना कहां तक है, 2021, वो उसके आगे ही है, तो ये 64th रो में ही लाई करेगा, और कहां लाई करेगा, 64th रो में ही लाई करेगा। 63 कैसे आ गया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर 63 उठा के दे दिया भाई। मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट नंबर निकाल लूं, फर्स्ट नंबर निकाला, मेरे को पहला नंबर मिल ही गया 2016 मिल गया, 2021, 64th रो में लाई कर रहा है, आंसर इज 64। 63 कैसे आ गया भाई, 63 का स्क्वायर इज 3969, और 63 माइनस कर दोगे तो 3906 आएगा, ठीक है। अब 3906 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 1953, ठीक है। सारे लिखोगे थोड़ा ही, 2021 तो बहुत आ गया, मैंने 64th रो लिखा, 2016 आया, 2021 मेरे को पता चल गया, क्यों, इसके बाद 2017 आएगा, 2018, 2019, 2020, फिर 2021, ये आ गया, इसी रो में ही लाई करेगा, पहला नंबर आ चुका है। इतना छोटा क्वेश्चन था यार, काफी बच्चों ने निकाला, बट 11th वालों ने नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला भाई, ये सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। Okay, on to the next one. Now he says a circle of radius 4 root 10 passes through two adjacent vertices of a square. So let me make my square first. No, let me make my circle first. Okay, cool. Now circle is here and it passes through two adjacent vertices of the square. So my square would look something like this. Cool. So let me name it A, B, C, D. Done. Okay. Now he says, and obviously radius of the circle is given 4 root 10. He says a tangent to the circle drawn from a third vertex of the square. Now third vertex, either I can take this or this, doesn't matter, length of the tangent would remain the same. So this is the one. Cool. Now the length of the tangent is twice the length of the side of the square. So if the side of the square is x, now the length of the tangent turns out to be 2. Cool. Now he says suppose there is a circle inscribed inside the square. So my circle is supposedly like this, inscribed. So touching all the sides. Cool. Write the distance between the centers of the two given circles. So one circle is given to be this, right? Suppose the center is here. The other circle is this. Suppose the center is here, right? I am interested in finding out this distance, the distance between the centers, right? Now, if I need to find the distance between the centers, somehow I would require the radius of this tiny circle. Now, if I want the radius, that means I need the side, right? Anyway, relationship regarding the side is given. That means I need to find the side of the square. Now, how do I find the side of the square? Now, mind that there is a tangent given to you. This has to be used. Now, this square is given to me. Now, I know that all the sides are equal. I also know that the angle is 90 degrees. Now 90 degree I have used in a circle, 90 degree. Where can I use it? 90 degree obviously circle, that means semicircle mein use ho sakta hai. So we might be able to do that. So what I'll do is I will extend this one. Right, it will meet somewhere. Right, now if this angle is 90, this angle is 90. Right, that means this is the angle in a semicircle. That means if I join C and suppose this point is F. Right, this should be the diameter, that means the center would lie over here, right? Okay, this I can use. Now I have to use that this is the tangent, and here I have drawn what? This is the secant of the circle.
Now, in a circle, there are very few results regarding the tangent. Either 90 degree use per or length of the tangent from an external point they are equal. Or the third very important result in circles, especially with regard to tangent, that is this one. From a point, if I have my tangent, suppose this is PT, and from this point I have my secant. And suppose this point is A and this point is B. I know that PT square is equal to CA into PB. CA into PB. This can be easily proved with what? Similarity, obviously ratio is given. Right? This is a very important result. In circle, if the tangent is there, always look where you can have a secant because this result might be used. Right? So, AE is the tangent and I have, let me name this point to be H. I have AH and AS. So, I can say that AE square is equal to AH into AS. AH into AS. Right? Same result. Okay. Now, AE obviously is 2x whole square, so that is 4x square, is equal to AH obviously is side of the square, which is right, into. Now, AS. What should I multiply x by in order to get 4x square? Obviously 4x. Right? That means AS, this entire length is 4x. And out of which this is x. That means HF would be 3x. HF is 3x. मुझे तूने रेडियस से यूज किया ही नहीं. Angular is semicircle दिया, that means diameter यूज करते हैं. एक बात बताओ. This is 3x. This is x, side of the square. Right? यहाँ तो 90 degree भी बन रहा है. And you know the hypotenuse, which is nothing but the diameter. Right? And diameter is what? 8 root 10. Right? Just apply in triangle HCF the Pythagoras theorem and you can find the value of x. And x turns out to be 8. Right? Now, if x is 8, that means this diameter is 8. That means radius of the circle is nothing but 4. Right? Okay. That means when I needed to find this, O dash, the center between this distance between the centers. Now this is obviously radius, which is 4. That means in all I need to find out this PO. Right? Now by symmetry, you can see ये यहाँ से perpendicular drop होगा, right? Midpoint होने वाला है उसका. अब मुझे अगर PO length निकालनी है, I know यहाँ पे perpendicular. That means this is parallel to this. These two sides are parallel. In triangle HCF, this side is parallel to this one. And O is the midpoint of this side CF, right? O is the diameter, right? O is the center. So diameter को वैसे करेगा. Now this is equal to this. That means this will be equal to this. But मुझे तो PO निकालना. I need to find out this length. You know the relationship between this and this, right? Because PO will be half of HF. अब HF क्या था? 3x. X आ चुका है मेरे पास 8. So that means this is 24. उसका half लेना है. So that means PO is 12. Just apply midpoint theorem, right? Now PO is 12, this is 4, that means the entire length is 16, which is the answer. Alright, on to the next one. He says let K be the second smallest number with exactly 28 divisors. Second smallest number with exactly 28 divisors. Write the sum of digits of K. Basically, I need to find the value of K. Right? Now mind you, he says exactly 28 divisors. So if I have any number, right, suppose that is K, or maybe N you can take, any number you can take it, right, I can factorize it, prime factorize it, so it may be P1, which is a prime number raised by something, so A1, into P2 raised by A2, into P3 raised by A3, right, it's answer. If I say, write the number of divisors of N, how do we find that out? We find that out as A1 plus 1. Into A2 plus 1, into A3 plus 1, and so on. This is how we find the number of divisors, right? Now he says that it has exactly 28 divisors. That means 28 will be expressed as product of some numbers, right? And product of some natural numbers only, right? So first case that can be, I can write 28 as 1 into 28, right? Now, if 1 and 28 is there, this is how I've written 28 as, right? What can be the number? Mind it,
I need to take the second smallest number, right? I need to take the smallest number second देख लेंगे, right? So that means I'll be using the smallest prime number available to me, which is 2, right? In that order, I will use it, right? So I can write this as, if I write the number 2 raised by 27, this number would have exactly 28 divisors. Why? Because 27 plus 1, 28. Into 1, you'll get 28. Right? Obviously, this is a very big number. I need the second smallest one. Right? 1 into 28. So, this is done. Now, I can write 28 as product of two numbers. 1 into 28 ho gaya. So, next I can take 2 into 14. Right? That means I can take the power of 2 as 13. And then, since I want another prime number, I'll take the second smallest one, which is 3 into 3. Right? Obviously, you can see 14 into 2, 28 divisors. Done? Okay. Then I can write 28 as 4 into 7. That I can write as 2 raised by 6 into 3 cube. Right? 7 into 4, you can see number of divisors is 28. Right? Obviously, out of these three, this is the smallest one till now. Right? How else? Now, 28 can be written as product of two numbers. Now, 28 can be written as product of three numbers as well. Right? So, maybe I can have 2, then I'll take 2, and then I'll take 7. Right? So, corresponding to this, I'll get 2 raised power 6 into 3 raised power 1 into 5 raised power 1. Because I need to involve another prime factor, so obviously I went with 5. Right? Check the number of divisors, 7 into 2 into 2, which is 28. Right? Okay. Now, is there any other way of writing 28 as product of three quantities? Actually, you cannot. Right? Because 2 to 7, you have already written prime factorization, you cannot factorize it further. Right? So, this is the case. Now, if I calculate, look at this, because out of those three, it was this one which was least, and look at this. Now, obviously, you can see this is 64 into 27, this is 64 into 15, that means this is the lesser quantity, lesser number. And this turns out to be 960. But my question is not about the smallest number. My question is about the second smallest number. Right? Second smallest, that means I need to increase it slightly. Now, instead of 5, maybe you can take the next prime number. So, 2 raised power 6 as it is into 3 raised power 1 into 7 raised power 1. Again, you can see 64 into 21 will be less than that one. Right? Has slightly increased because instead of 5, I am taking 7. So, this must be the second smallest number, and I think this turns out to be 1344. Right? You need to write the sum of the digits, which turn out to be 12, which is the prime. Alright, on to the next one. Now, he says a vessel is filled to its capacity. That means it's entirely filled with pure coconut milk. 9 liters is withdrawn and replaced with an equal amount of water. So, 9 liters of milk have been taken out and 9 liters of water has been put in. Now, he says 9 liters of the mixture is again withdrawn and then replaced with equal amount of water. Right? Okay. Now, he says after these changes, the vessel contains 7.1 liters of pure coconut milk less than it did initially. Find the capacity in liters. Right? So, whatever I need to find out, I will suppose that to be X. Now, mind it, initially the vessel is filled to its capacity, right, with pure coconut milk. So, initially milk, the amount of milk would be equal to the capacity, which we have taken to be X liters. So, we have milk X liters, right. Initially, there is no water, so 0 liters water. Cool. Now, he says 9 liters have been withdrawn from the vessel. So, 9 liters of milk obviously have been taken out, X minus 9. And it has been replaced with equal amount of water. So, that means I now have 9 liters of water. Right? Till now, we have done this. Now, he says 9 liters of the mixture. Right? Now, there is a mixture. Now, since we are going to talk about mixture, let me talk about milk as well as the water. Right? If we want to talk about them individually, I will talk about parts of them. How many parts of milk is there? How many parts of water is there? Right? So, if the total capacity of the vessel is X, and I know that we have X minus 9 liters of milk, that means X minus 9 by X, part of the vessel.
right, that has milk, and the remaining one, so that means N divided by X, that means this much part of the capacity of the vessel that has water in it, right? Okay. Now he says 9 liters of mixture is withdrawn, right? So obviously some milk would be taken out of that mixture and some water would be taken out, right? Now I know in each one, right, in the entirety of one, I have this much part of milk, right? Now how much liters I need to withdraw? 9. So in 9, how many parts of milk will be taken out? Right? That would be 9 into X minus 9 divided by X. Because in 1, I had this much part, right? In 9, I would have this much part. Now this much has been taken out, right? Similarly, if I want to talk about this, but in 1, I had this much part of water. Now in 9, how much water will be there? 9 into 97. Right? So this much water would be taken out, but we do not care about water, so that is why I will just stick to the milk, right? This much milk has been taken out from what? X minus 9, right? So this is nothing but X minus 9 minus this thing, 9 into X minus 9 by X, right? Now this is the quantity of water, this is the quantity of milk available now. Now says after this changing, the vessel contains 7.1 liters of milk, less than it did initially. Initially, how much milk was there? X. Now it is this much. He says the difference is 17.1. So this minus this, that is 17.1. Right? In this question, it was just about setting up the equation. Now equation is there. It will be a linear equation. You can easily solve it. Answer will turn out to be 90. Is the right question. Next one, solve in real numbers the system of equations. So A plus B is equal to 8, AB plus C plus D is equal to 23, AD plus BC equal to 28, CD is equal to 12, where conditions are there. A is not equal to B, C is greater than D. And if A, B, C, D is such a solution, you need to find the value of C. Now the easiest method is, now as you can see, all of these are integers. So let me look for the integral solutions first. Right? Makes sense? Now here it is given that CD is equal to 12. Right? CD is equal to 12. So that means I need to write 12 as product of two integers. I can write that as 12 into 1. Right? One such case. That means you will take C to be 12 and D is equal to 1. Then try to find the corresponding values of A, B, C and D and see whether all the conditions, all the equations are satisfied. In this case, it will not be. Right? Don't worry, it's fine. 12 into 1 does not work. Go for 6 into 2. Take C to be 6 and D is equal to 2. Solve it, check whether all the 4 equations are satisfied or not. And to your surprise, you'll find that this is satisfied. So C will turn out to be 6. That is why the answer is 0, 6. This was the very first thing that you could have done. Why? Because hit and trial is a very good method. And since integers were getting involved, there might have been integral solutions. Just find them out. Right? But let's try to understand some method as well. How will we find the solution of these system of equations? Now, if you look carefully, I have AB plus B is equal to 8. AB plus C plus D is equal to 23. AD plus BC equal to 28. And CD is equal to 12. These 4 equations are there. Now, try to find out where do these terms occur. Right? Maybe in some factorizing polynomial I should say, these 4 expressions will occur. Now, how should I make use of that? Now, mind it, A plus B is there, right? And CD is there. A plus B is there and CD is there. Let me consider 2 quadratic factors. So x square plus ax plus c. And the other I'll take x square plus bx plus d. Can you see that A plus B occurs in this and CD also occurs in this? Right? Let me just try to, let me just open this up. So x raised to power 4 plus coefficient of x cube, that will be what?
A plus B, A plus B, A plus B into x cube plus, now coefficient of x square I'll write, coefficient of x square, so that is B plus AB plus C. AB plus C plus D, there might not be a coincidence here, so something is happening, plus, now coefficient of x I'll write, which is AD, right, AD plus BC, AD plus BC, okay, and obviously the last term would be CD. You were able to write two factors in which these four expressions occur, right? Because come on, A plus B is there, A plus B is there. That means I can have a factorization. A you will pick up from here and B you will pick up from here. That means you can keep A and B in separate factors, right? Now the question is, what is benefit of this? I think it is quite beneficial. Why? Because I know this, I know this, I know this, and I know this. So basically this becomes a polynomial, x raised to power 4 plus 8x cube plus 23x square plus 28x plus 12. This is a very nice polynomial. Why? Because this is easily factorizable. Minus 1 is the root. I should say 0. Minus 1 is the 0. Minus 2 is the 0. Minus 3 is the 0. This can be written as x plus 1 into x plus 2 into x plus 2 into x plus 3. Why I have written like this? Why? Because I am interested in the values of A, B, C and D. Cool? So, let me see. Let me write this as now x square plus ax plus c into x square plus, in fact, let me just erase this and I'll get it. X square plus ax plus c into x square plus bx plus d. Right? If I want to find out this quadratic factor, maybe I can multiply these two. Right? And obviously this quadratic factor will be available when I multiply these two. Right? So this is either is equal to x square plus 3x plus 2 and this is equal to x square plus 5x plus 6. Right? This is one of the cases. I am writing down all the solutions. Even though my answer is already there, I am writing down all the solutions because that is how we learn currently. Right. Okay. What else? Okay. Right. So these two I multiplied. What I can do is, if I multiply these two and these two, that is one of the same thing. Right? Okay. Now what else can I do? Then next I can do is, I can multiply these two and multiply these two. So x square plus ax plus c, this into this, that is x square plus 4x plus 3 and this into this, that is x square plus 4x plus 4. Right? Obviously another thing what can be, these are the two things but can be repeated. So this is x square plus 5x plus 6. This one, these can be interchanged and corresponding x square plus 3x plus 2. And one case would be, I don't have a space here, so maybe I can write here. X square plus 4x plus 4 and x square plus 4x plus 3. Right? In each of these cases, you will get the ordered quadruples, which are the solutions for the equation. Our aim was just to find one solution, but this is how you solve the equation, system of equations, if number of solutions were asked. In fact, we asked the same question in a very different form in the previous year mock test. So if you were unable to solve this question, that means we are not doing previous year papers, which obviously is not great. क्वेश्चन नंबर 17 अब आ चुके हैं हम 3 मार्कर पे 3 मार्कर चल रहे हैं इतनी देर से 17 ध्यान रखना A circle passes through A and B of triangle ABC, touches BC at B. The side AC is divided by the circle into two parts, AM and NC, so that AM is equal to NC plus BC by 2. Write the length BC if AC is, ये दिया हुआ है. तो मतलब कि एक ट्राइंगल ABC बना के रखा हुआ था मैंने आपके लिए, एक सर्कल बनाया बिल्कुल. AC is divided, AC को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, AM and NC में, जैसा उसने बोला. AM is equal to NC plus BC by 2, उसका यूज करना है.
लेंथ ऑफ AC, ये पूरा का पूरा लेंथ मुझे दिया हुआ है 9, ये पूरा लेंथ मुझे 9 दिया हुआ, राइट? तो एक काम करते हैं, लेट MC बी X, MC को मैंने X ले लिया, तो मेरे ख्याल से आप AM तो सीधा बता ही दोगे, ये क्या आ जाएगा 9 - X, सीधा ही है, ठीक है? चलो जी, मार्क हो गया, यहां पे ये भी पता चल गया। अब AM MC प्लस BC बाई 2 और BC ही मुझे निकालना है, मैं इसका यूज कर लेता हूं, AM इज 9 - X, यहां पे लिखा 9 - X, MC इज X, ये रहा, BC तो चाहिए भाई, BC बाय 2, ओके, क्रॉस कर दो, 9 to 18 माइनस 2x, ये x भी इधर ले आओ, माइनस x इज इक्वल टू BC की वैल्यू आ गई जी, BC की वैल्यू आ गई मेरे पास 18 माइनस 3x, 3 कॉमन ले लेते हैं, बाद में जैसा यूज होगा वैसा कर लेंगे, 3 कॉमन लिया, 6 3 से 18 होता है, मेरे पास BC आ गया इन टर्म्स ऑफ, एक काम किया मैंने, सिर्फ इंटरप्रेट किया, एक 9 लिखा, 9 का यूज किया और एक इसका यूज किया। अब राइट द लेंथ BC इन टर्म्स ऑफ x है, कुछ ना कुछ और लगाना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, BC टेंजेंट है और AC सीकेंट है, M और A पे कट करता है, AC इज द सीकेंट। मैं एक काम कह सकता हूं, एंगल ये वाला देख रहे हो, ये वाला एंगल 1 और एंगल A दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये दोनों इक्वल है, C को कॉमन ले लो भाई, C को कॉमन ले लो, तो मतलब कि मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता हूं, बड़ा सिंपल सा सीधा, CBM, ट्राइंगल CBM की बात करी मैंने, ठीक है, विल बी सिमिलर टू, अब मैं लिखूंगा नहीं, अपने आप देख सकते हो, CAB, बड़ी वाली ट्राइंगल CAB, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, मैंने बता दिया कौन कौन से एंगल्स इक्वल है, कैसे एंगल्स इक्वल हुए, मैंने सिमिलैरिटी की कंडीशन लिख दी। अब मेरे को तो चाहिए BC दो तरफ से आ रहा है, मतलब कि मैं एक BC यहां से उठा सकता हूं, मैंने इसको लिखा BC, अगर BC लिखा तो यहां से AC उठाना पड़ेगा मेरे को, चलो कोई चक्कर नहीं, उठा लेंगे, AC तो मेरे को वैसे भी पता ही है, यहां से भी BC उठा लेता हूं, BC मतलब कि यहां से CM उठाऊंगा तो यहां से BC मिलेगा, तो मैं यहां पे CM लिख लेता हूं, यहां पे BC लिख लेता हूं, BC मुझे चाहिए भाई BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, AC इंटू CM, मैंने सिमिलैरिटी का यूज किया, या फिर 10th की तरह ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करी थी, P इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, याद करो, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस एंटायर थिंग होता है, हमें ये भी पता है, वही एग्जैक्टली चीज प्रूव करके दिखा दी, सो दैट अगर किसी को भूल भी गया 11th वाले बच्चे को याद नहीं आ रहा कैसे किया था, सो उसका प्रूफ है सिमिलैरिटी से आता है, जरा सा ही काम है, ठीक है। सो BC मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाता है, और 6 माइनस x का मैंने स्क्वायर कर दिया, AC तो है ही 9, लो जी कट गया AC में, CM x है, लो कहानी खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, खोल दो, दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो मैं अगर इसको खोल दूं तो ये आ गया मेरे पास 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस x इक्वल टू 0। सो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0, मेरे को तो पता है, करते करते दिमाग में आ गया था क्या यूज करने वाला हूं, स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, x माइनस 9 एंड x माइनस 4, 9 एंड 4 पे टूट रहा। अब x की वैल्यू या तो 9 होगी या x की वैल्यू क्या होगी 4, खुद बताओ, x ये वाला 9 आ गया, मतलब कि ये क्या हो गया 0, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ये तो गया, तो मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4, तो लो BC निकल गया, BC C 6 माइनस 4 दैट इज 2, BC की वैल्यू आ गई 6, यही था आपका आंसर 06, ऑफ कोर्स आंसर इज 06। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रीमार्कर अच्छा इजी क्वेश्चन था, टूटना चाहिए था।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, 3 मार्कर है. इन ट्राइंगल एबीसी एडी, ओके, डीई, ओके, सीएफ, ओके, आर ऑल्टीट्यूड्स. परपेंडिकुलर है भाई. ठीक है, ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल. ठीक है, एंगल ए 70 दे दिया. ओके, ये पूरा एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्रीज. ओके, और उसने बोल दिया एंगल डी इन डीईएफ. मैंने बना के रख दिया है, डीईएफ ज्वाइन कर दिया, मतलब कि ये पूरा एंगल चाहिए, द एंटायर एंगल बीडी. ठीक है, सो क्या किया जाए? एक काम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर्स हैं तो सर्कल्स बनेंगे, फटाफट बनेंगे सर्कल्स. तो लेट्स सी, सर्कल्स बनाते हैं. मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी ई देखता हूं. देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी, देखिए ट्राइंगल ए बी ई. मैं ना ये एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की. इसको एंगल 1 ले लेते हैं. ठीक है, एंगल 1 में बोल सकता हूं 20 डिग्री होगा. मेरे ख्याल से सब लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे. एंगल 120 बिकॉज एंगल ए इज 70 एंड एंगल ई इज 90. ठीक है, एएसपी लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर ये मेरे पास आ चुका है, दिस इज कॉल्ड 20, तो सेम वे उल्टा भी तो चलेगा. यहां पे मैंने 2 लिख लिया. ट्राइंगल कौन सी उठाई? ACF. ACF इसमें भी लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी. अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा. एंगल 2 इज अगेन 20 डिग्री. ठीक है, इतना तो दिख रहा था. साथ में परपेंडिकुलर्स है, तो इतना दिमाग में छपता है कि भाई हमारे पास सर्कल बनने वाले हैं, खूब सारे सर्कल्स बनेंगे. बट हमें जाना कहां है? सर्कल्स देख के बनाने पड़ेंगे. खूब सारे बना सकते हैं सर्कल्स. एंगल इन द सेम सेगमेंट. देखो बीसी को सेगमेंट रखो, ये 90, बीसी को सेगमेंट रखो, ये 90, तो मैं सर्कल यहां पे भी बना सकता हूं. ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट का यूज करके सर्कल बना लिया. दूसरा, ऑपोजिट एंगल. देखो डी भी 90 है, एफ भी 90 है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो वहां से भी सर्कल बना सकते हो. मल्टीपल सर्कल्स विल बी देयर. बट सारे क्यों बनाने, दिखेगा ही नहीं, फिर तो अंधे हो जाएंगे हम लोग. तो हमें चाहिए क्या? देखो 20 यहां आ रहा है, तो मैं ना सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं ना इसको तोड़ देता हूं. यहां 2 ले लिया, मैं इसको ले लेता हूं एंगल 3 और इसको ले लेता हूं एंगल 4. 3 + 4 लिख लूंगा एंगल डी. एंगल डी को लिखूंगा एंगल 3 + एंगल 4. दोनों को इंडिविजुअली अगर मैंने ढूंढ लिया, एंगल 3 + एंगल 4, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, क्या करते हैं? ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, इसी का यूज करना पड़ेगा. देखो सर्कल कैसे बना रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा, रफ हैंड से बना रहा हूं. ये सर्कल बनने वाला है, राइट? कैसे? एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90. सो एफ प्लस डी इज 90, 180. ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं एफ एच डी डी. एफ एच डी डी साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक, जो भी छोटा सा लिख दिया. ठीक है, सो मतलब कि मैं यहां से कह सकता हूं, इसी का यूज करते हुए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 विच इज 20 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ऑल गुड, डन. नेक्स्ट, मेरे ख्याल से सेम चीज दिख रही होगी, डी और ई को भी यूज करते हुए. यहां से देखो, ये इधर से गया, ये बड़ा सा सर्कल बनने वाला है. दिख गया होगा, अब तक तो आंसर ही मिल गया होगा. स्किप करना है कर दो. देखो मैं सीधा बोलूंगा ई सिमिलरली करके. ठीक है, ई एच डी सी साइक्लिक. फिर से अगर ये साइक्लिक हुआ तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 20 डिग्री. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, मतलब कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो एंगल डी कितना हो गया? 40. काम खत्म. इतना सा क्वेश्चन था टोटल. सर्कल्स बन रहे थे, वो छपा क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स का टंटा था. ऑल्टीट्यूड्स के लिए हमने सर्कल बनाने थे. सर्कल्स कैसे बनाने हैं देखना था, और कुछ एंगल्स तो चाहिए ही होंगे ऑफ कोर्स. तो ऑल्टीट्यूड्स आए, सर्कल्स बने, ये चीज ध्यान रखना हमेशा. Alright, for the next question, he says consider this equation where r is real. Now he says
this equation has two distinct solutions. Now, a quadratic equation has two distinct solutions which are both negative. Right? So, distinct solutions I have, and both of them are negative. So, negative, negative. Exactly when P is less than R, less than Q. So, that means there is a restriction on R basically. Right? For some real numbers P and Q, you need to write the value of Q minus P. Right? So basically Q minus P, you need the restriction on R. Right? So you need to find where R is very strong. From which value to which value. Now two conditions are given to you. First is, it has distinct solutions. Right? A quadratic equation has distinct solutions. That means discriminant needs to be greater than 0. Right? Okay. So discriminant is greater than 0. So let me write my discriminant, c square minus 4ac. So r plus 7 whole square minus 4 into a is obviously 1 into c, which is obviously r plus 87. He says this is greater than 0. Right? This will actually turn out to be quadratic, which you can factorize. It turns out to be r plus 23 into r minus 30 greater than 0. Right? That means r is either greater than 30 or r is less than minus 20. Either this is the case or this is the case. First condition done. Now, let me utilize the second condition. Second condition is both the roots are negative. Both the roots are negative. That means, what can I say about coefficients? Because r is involved in the coefficients. What can I say about the coefficients of the equation? Mind it, if both the roots are negative, that means sum will be negative. Right? Now, sum of roots you can have using the coefficients. Also, if both the roots are negative, that means product has to be positive. Right? Now, first of all, sum is negative. Sum is nothing but r plus 7. R plus 7 is negative, that means less than 0. Right? And at the same time, he says product is positive. Product is nothing but r plus 87. Positive greater than 0. Right? From here, I can say r is less than minus 7 and r is greater than minus 87. Right? That means if I combine the two, I can say that r lies between minus 87 and minus 7. Second condition. Right? Both of these conditions have to be satisfied. Now, if both of them have to be satisfied, maybe I can have the number line, or if I can see the answer straight away, good for you. But I'll make the number line. Right? So I will mark minus 87, then I'll mark minus 23, then minus 7, then 13. Right? Now, first is r is less than minus 23. So either r is in this one. Less than, so obviously there's a hole over here. And r is greater than 13. All real numbers go greater than 13. Right? First condition. Second, minus 87 to minus 7. So here. So here. Right? Now I want r to satisfy this as well as this. So that means r should lie over here and it should lie over here. So that means the common part. So that means I'm talking about this one. Right? No common part, no common part. So this is the only common part. So that means r must vary from minus 87 and minus 26. Right? Done? Now, my P and Q are fixed. My P is minus 87. My Q is minus 23. Just substitute it and you will get the answer as 64. On to the next one. Now he says the base BC of triangle ABC is divided at D so that BD is equal to 2DC. So let me make the figure side by side. Right? Now A, B, C. Now BC is divided so that BD is equal to twice of DC. Okay. Right? So this is twice of this. So if this is X, this is 2X. Right? So basically I know this ratio 2 is to 1. Maybe I can use that. BD by BC is 2 is to 1. Right? On BC, on the side remote from A, that means not on this side, a semicircle is drawn. Right? So on BC, semicircle, but this side, so maybe this is the one. Right? This is a semicircle, that means BC is the diameter. Now he says through D, draw DE at right angle to BC to cut the semicircle in C. So from here, I need to make a perpendicular.
to the circle, which meets the circle at E. This is 90 degrees. Alright. Now he says from BC, cut off a part BP equal to CE. Now CE length is this now. Now he says from BC, from here I need to cut off a part BP which is equal to this one. So I'll measure this and cut it over here. Suppose it turns out to be this one. We know that BP is actually equal to CE. Done? Now he says draw PQ parallel to CA. PQ parallel to CA, where obviously Q is on BA. So this parallel to this, so it is somewhat like this. Yeah. So this parallel to this. Done? Now he says if area of triangle ABC, as in this entire area is 72, you need to find out the area of BCQ. BCQ, this area. Right? Now mind it, since these two are parallel, can I say that this triangle is similar to the big one? Right? Triangle BCQ is similar to triangle BCA. Right? If I know the bigger area, I can find the smaller area, provided I know what? The ratio of the sides. So I should know, maybe I should know BC by BC, maybe I should know BQ by BA, maybe I should know QP by AC. Now my guess is I will get to know BP by BC. So all I am interested in finding out the BP by BC ratio. Right? Now here, wait a second. He says BP is equal to CE. That means maybe somehow I can find CE by BC. Maybe. We don't know, but maybe. Which is a very peculiar thing. I need to find this by this. Okay. In order to find this. Now what do I know? What I can utilize over here? Right? Mind it, I need to use this 90 degree. Mind it, I have to use of this fact that this is a semicircle. Now semicircle, what is the property? That angle in a semicircle is 90 degree, right? So maybe if I can join this. Right? This is obviously 90 degree. That means BEC is a right triangle and this is actually the odd shoot. Maybe I can use that. Also, till now I have not utilized this fact 2 by 1. This is 2 is to 1. So maybe if this length is 2x, this length is x. Right? Okay. What else can I use? Now, this is 90, this is 90. We've already proven so many times that DE square is equal to BD into CC. Right? Using similarity, we can do that. So that means DE square will turn out to be, this becomes 2x square, so this becomes root 2x. Whatever length I get to know, I'm just writing it down. Right? This is root 2x. Mind it, this is x, this is root 2x. That means CE is nothing but root 3x. I think our problem is done now. Look, CE is nothing but root 3x. BC, the entire thing is 3x. So that means this ratio is 1 by root 3. Right? This ratio is 1 by root 3, that means BP by BC is 1 by root 3. Right? BP by BC. Now, since I know the ratio of corresponding sides, can I find the ratio of the areas of similar triangles? Even if we do not know, within 10 seconds I can derive it. Right? The ratio of the area would be nothing but, I am writing it here, area of BPQ whole divided by area of ABC would be nothing but 1 by root 3 whole square, which is 1 by 3. Now, if this is given to be 72, this will turn out to be 24, which is the answer. Alright, on to the next one. Now, he says write the number of fixed digit sequences which can be formed using the digits 0, 1, 2 or 4. Right? Now, there is a condition such that difference between any two consecutive digits is 1. Right? Now, he says I need to form 6 digit sequence. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Also, it is mentioned in the question that the sequence can start with 0 because it's a sequence. Right? Now, he says difference between any two consecutive digits is 1. So, that means if I take these two consecutive digits, difference is 1. If I take these two, difference is 1. If I take these two, difference is 1. Any two consecutive digits, the difference has to be 1. Right? Now, my digits are what? 0, 1, 2, 3, and 4. Right? Now, difference is 1. Difference is 1. That means, if I have a number 1 over here,
Here, either the digit can be 0 or it can be 2. Okay. Now, if suppose I have my number as 2 over here, and the next digit has to be either 1 or 3. Right? Difference is 1. Now, if I look carefully, if I am taking an odd number over here, the next number has to be even. Right? And if I am taking even number over here, the next number or the number which is to it has to be 1. Right? Since the difference is 1, I have to make sure that odd, even, odd, even. The alternating pattern is there because the difference is 1. Right? Now, since odd numbers and even numbers are alternating, there are just two possibilities. Either I will have an odd number here, then even, then odd, then even, odd, even. The second might be, obviously the sequence might start with even, then odd, even, odd, even, odd. Right? These are the two possible cases if I can count the number of sequences in this case as well as this one. I'll add them up and my answer would be there. Right? So let me consider my first case, which is this one. Right? In fact, let me write it there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Now, here I have to put in odd, and obviously the remaining places have to be filled with even. Now, odd numbers I have, that is 1 and 3. And then even I have 0, 2, 4. Right? Now, I have to fill in odd numbers. And I have 2. What I can do is, I can put 1 over here, then 1, then 1. Let me write the cases down. Then I can have 1 over here, then 1, then 3. Then, 3 have to be basically the permutation of 3 in this arrangement. So, 1, 3, 1, then 3, 1, 1. Right? Then I can have 2 3s also. So, 1, 3, 3. Then 3, 1, 3, then 3, 3, 1. Right? I can have 3 3s also. So 3, 3, 3. Right? I have arranged these two odd digits in these three places in the number of cases which are possible. Right? There is no case that I have left. Let me check out. Yes, I think we have exhausted all those ones, hopefully. Right? Now, let me count the number of sequences in this case. Right? 1, 1, 1. Now, if 1 is coming over here, second place I need to fill it. Either I will have 0 or I will have 2. I have just two choices to fill up the second place. Right? Okay. Now, let's come here. Corresponding to this, in how many different ways can I fill this place? Either I will fill in 0 or 2. Again, I have two possibilities. Corresponding to this, I have two possibilities. And then again, if 1 is here, I have to put either 0 or 2. Again, two possibilities. Now, these are corresponding choices, right? So, in total, if I need to find out how many sequences are there, that will be 2 into 2 into 2, which is 8. Correspondingly, right? Let's come to the next one. If 1 is over here, I can have either 0 and 2, and wo aage wale ke sath bhi match kare, so it's absolutely fine. Now let's come to this one. If 1 is here, either I can have 0 or 2. Mind it, if I take 0 over here, I have to make sure that the difference of these two digits has to be 1. Now, if I take 0, clearly the difference is not 1. So that means I cannot take 0. That means the only number that I can take, that is 2. Right? So 2 has to be over here. Just one case. One possibility. Careful. Right? Now 3 is over here. Either I will put 0 or either I will put 2 or 4. Again, 2 possibilities. Right? Corresponding to this choice over here, I have one choice. Corresponding to each choice over here, I have two choices. So in total, I will have 4 choices. Right? Now, here again, if I have 1 over here or 3 over here, I cannot put 0 over here. So it just will be 2. So that means just one case. So that's 1. Then just one possibility. Then 2 choices. 2. Right? Then just one possibility. 2 possibilities. 2 possibilities. That's 4. Right, 1 possibility, 2 possibilities, 2 possibilities, that is 4. Then 1 possibility, 1 possibility, 2 possibilities, that is 2. Then 2 possibilities, 1 possibility, 2 possibilities, that is 4. Then 2 possibilities, 2 possibilities, 2 possibilities, which is 8. Right, so in total, how many these are? These are 10, 20, 20 plus 16, 36, right? So in this case, I have 36 6-digit sequences, right? In which case? In this case.
Right? On the similar line, you can find out this one also. You need to write it down, and you will find out it also turns out to be 2 digits. Right? So in total, I would have my 72 6-digit sequences, which is the answer. Now he says write the sum of the last 2 digits of the least whole number which begins with the digit 1 and increases 3 times, then this digit is carried to the end of the number. Right? So I'll break the question. He says write the sum of last 2 digits. Fine. If I can find the number, I can find the sum of last 2 digits. Now I need to find the least whole number. Now the least whole number will satisfy this property, which begins with the digit 1. So the whole number begins with the digit 1. Right? After that, obviously some digits are there. I don't know how many. Right? And increases 3 times, then this digit is carried to the end of the number. So suppose this was my number 1, succeeded by all of these digits. So suppose 1, 2, 3, so on. Suppose I have n digits over there. Right? He says this number increases by 3 times, then I shift this one to the end. Right? That means my number becomes dash dash dash. Then n digits go there, right? And my 1, instead of being in the front, it will be at the right. So my number increases 3 times. So that means this number is the bigger one, right? And this number is the bigger one. That means I can write this number in terms of this number. So first of all, obviously, the problem is this one. I do not know which digit, whether the first digit is, I don't know the first digit, second digit, third digit. It's absolutely fine. But the thing is, instead of assuming all of these digits, because that will get me n different variables, I don't want that. Obviously not, right? Since I want this chunk itself, what I'll do is, I will say that this chunk is nothing but x. So my number looks like this, 1 followed by this number x. And this x has n digits. Right? Now if I need to study this number, what I'll do is, I'll write the expanded form. Right? Let me write the expanded form. So 1 now followed by n digits, so 1 into 10 is plus x. Done? Right? Now the second number is nothing but my chunk x. Obviously it has n digits. And last I have 1. So if I need to write the expanded form of this is x. Right? It is just multiplied by 10. So x into 10 plus 1. So this number is nothing but this. Now he says that this number has been increased by 3 times. So that means if I multiply this by 3, I should get this number. Right? I have this equation which I need to solve. This equation. Now first of all, let me just carry the like terms. So I'll get 3 into 10 raised per n plus is equal to 7x plus 1. Right, into 10 raised per n. Right, now some conditions are obviously there. Now n, since n is the number of digits, it has to be a natural number, and x, since it is a number, it has to be a natural number. So that means I need to solve this equation over the set of natural numbers. Also, I want the least whole number. Right, I want this number to be least. Now this number would be least, then x is least. Right, so when x is least, that means this thing have to be least. This thing has to be least, that means this has to be least. Oh, this has to be least. Or minimum, whatever you want to call it. Right? Now this has to be least, that means n has to be least. Right? Now n has to be least. Let me check. I will start with n is equal to 0. N is equal to 1. It has to be a natural number. Right? When n is equal to 1, this equation actually becomes 3 into 10 is equal to 7x plus 1. From here, x will not be a whole number. Reject this. Least रहेगा. n is equal to 2 के लिए try करते हैं. This becomes 3 into 10 square is equal to 7x plus 1. Again, x is not a natural number over there. You can try for n is equal to 3. You will not get x as a natural number. You can try for n is equal to 4. You will not get it. For n is equal to 5, you will get x as x. You will get that will be 4, 2, 8, 5, 7. Right? That means this is the least value of n for which I am getting x as a whole number. Right? So
So my number actually becomes 1 followed by x, right? So 1, x is this, 4, 2, 8, 5, 7. Right? Now this is the least whole number which satisfies this condition. Right? Got it? Now he says you need to write the sum of last two digits. Sum of last two digits, the answer for this question is obviously 12. Moving on to question number 23. 5 marker again. थिंकिंग बेस्ड था, लॉजिक बेस्ड था, ज्यादा कैलकुलेशन थी नहीं. ठीक है, फिगर बनानी मेन पार्ट था. ये कंस्ट्रक्ट ऑन साइड AB and BC of triangle ABC are squares ABDE, BCKM, ये भी बना दिया स्क्वायर. If the length of the median through B, मीडियन बनाई BT, मीडियन थ्रू B बोला तो मतलब कि मैंने BT को 7 ले लिया, DM की लेंथ चाहिए, ये रहा DM. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीडियन. याद करो, सेंट्रॉइड करते थे, पैरेललोग्राम बनाते थे, मतलब कि यहां पे भी मीडियन आया तो पैरेललोग्राम यूज जरूर होगा. हो सकता है, देयर इज अ गुड चांस के पैरेललोग्राम यूज हो, तो आपको पैरेललोग्राम दिमाग में आना चाहिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियंस, एंड एरियाज भी आने चाहिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियंस. सो इसके अंदर एरियाज की बात हो नहीं रही थी, वी शुड गो विद द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या था? DT को मैंने एक्सटेंड किया टू TT या TT, दोनों इक्वल हो, मतलब कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल कर दिया. ठीक है, BT एंड TP. और क्योंकि BT मीडियन था, ये मीडियन था मेरे लिए, इससे मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली, AT और CT भी इक्वल है, तो मैंने यहां से एक चीज डिड्यूस करी. क्या डिड्यूस करी? BAPC. BAPC क्या बना? पैरेललोग्राम. BAPC क्या बन गया मेरे पास? पैरेललोग्राम. अब टंटा खत्म हो चुका है, वैसे काफी सीधा था. ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, इट इज अ स्क्वायर, और मैं सेम मार्किंग कर रहा हूं, दैट इज नॉट राइट. मैं इसको 3 मार्क्स कर देता हूं और इसको 4 मार्क्स कर देता हूं. ठीक है, मेरे को ये ऑलरेडी पता था. ठीक है, अब बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कह सकता हूं, AB इज इक्वल टू CP. मतलब कि AB इज इक्वल टू CP, मतलब कि ये इसके बराबर आ चुका, ये इसके बराबर आ चुका है. तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात हो रही है. ठीक है, ट्राइंगल उठाई मैंने, कहां गई? ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल, मैंने B से शुरू किया, बड़ा एंगल है तो C से शुरू करूंगा, 4 वाली साइड पे गया, CBP. इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मेरे को कुछ चीजें पता थी. BM CB के बराबर है. स्क्वायर की बात करिए भाई. उसके बाद BD CP के बराबर है, BD CP के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ही. पैरेललोग्राम का यूज करके प्रॉब्लम वही हो चुकी. एक एंगल मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ठीक है, लेट्स गो विद दिस एंगल. ये एंगल तो 90 है, ये एंगल भी 90 है. इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, इसको ले लेते हैं हम एंगल 1, इस पूरे एंगल को ले लेता हूं मैं 2. सो मैं सिंपल एक चीज कह सकता हूं, इसके अंदर पूरे को ही ले रहा हूं मैं, यहां से एरो डाल के यहां कर रहा हूं. एंगल 2 विल बी इक्वल टू, ये 90 90 180 देता है, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा. मैंने यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, किसी को नहीं पता. कंप्लीट एंगल की बात करिए, यहां पे लिख रहा हूं कंप्लीट एंगल. ऑल गुड. अब वो आ गया, ये पैरेललोग्राम था ना. पैरेललोग्राम से मैं एक और चीज कह सकता हूं, ये 2 अगर 180 माइनस थीटा है तो एंगल 3, एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री. ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं. देखो, को इंटीरियर की बात करी तो एंगल 2
प्लस एंगल 3 इज 180। ये मेरे पास 180 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी मेरे पास 180 आ जाती ना, थीटा आ जाती है। तो मतलब कि मेरे पास यहां पे एंगल 1 है और यहां पे एंगल 3 है, विच इज इक्वल टू थीटा डिग्रीज। ठीक है, तो मैं कह दूं BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDT यूजिंग SAS। अगर SAS से ये कॉन्ग्रुएंट है तो काम खत्म हो चुका है। DM इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू BP, B से P, कैसे CP/CT। सो DM मेरे को निकालना था, ये मेरे पास 7 था, तो मैंने इसको 2 into 7 लिख लिया, दैट इज ये था क्वेश्चन। जब भी मीडियन आए, पैरेललोग्राम का यूज हो सकता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, 5 मार्क्स गाइस, 5 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन मैं टिपिकली कह सकता हूं लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फंडा लगेगा, मतलब कि जीरो कैलकुलेशन वर्क, जीरो, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, नो एंगल चेजिंग, नथिंग, थिंकिंग, सोच क्या मांग रहा है। सबसे पहली चीज फिगर बनानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट, इसलिए 5 नंबर में दिया, आंसर मैं 10 सेकंड में बता सकता हूं, ठीक है, बट देखो सोचा कैसे गया। 5 नंबर इसलिए दिया था, वर्किंग नहीं है, थिंकिंग तो इन्वॉल्व है, टाइम लगेगा सोचने में इसके अंदर, इसी के लिए टाइम दिया था। माथा मत पीटना इसके बाद, और मेरे को तो कुटना मत बिल्कुल भी, सर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कुछ था ही नहीं इसमें, पर दिखा नहीं, ठीक है। चलो, E and F are 2 points on side BC and CD, E and F मार्क कर दिए, ऑफ अ स्क्वायर ABCD बनाया, EAF, ये देखो 45 डिग्री यहां पे मार्क है। M and N be the point of intersection of the diagonal BD बनाई, point of intersection M and N same order में respectively बोला था। P is in the point of intersection of MF and NE, M को F से ज्वाइन किया, N को E से ज्वाइन किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा आ गया। फिर उसने बोला AP को ज्वाइन करो और प्रोड्यूस करो K पर, AKE निकाल लेना, ठीक है। AKE मतलब कि इस एंगल की बात है, ठीक है। सोच देखो क्या करी। अब 90 डिग्रीज है, क्योंकि B 90, C 90, D 90, A 90, साथ में यहां पे 45 दिया हुआ है, तो इस 45 का यूज करना आना चाहिए। मैंने सबसे पहले तो डायगोनल्स हैं जो मेरे को और मिला, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, जो चीजें मुझे मिली पहले तो मैंने वो मार्क किए, ठीक है। अब देखो सोच क्या लगाई, मैंने क्या पकड़ा कि ये 45 का यूज करना है, मैं इसको ना 1 लिख लेता हूं, ध्यान से देखना, ये 45 का यूज करना है, और मैंने सारी जगह 45 लिख लिए थे। देखो दूसरा एंगल देखो कौन सा लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे भी मैंने दे दिया 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सेगमेंट देखो कौन सी लिख रहा हूं जानबूझ के, सेगमेंट उठाई मैंने NE सेगमेंट, देखो मार्क कर देता हूं, देखो रेड से, सॉरी रेड से मार्क करने को बोला, रेड से मार्क नहीं हो रहा, नहीं हदी होगी, चल कोई चक्कर नहीं है, ये मैंने मार्क करना था, ठीक है। यहां से ये मार्क किया, यहीं से ये मार्क किया, angles in the same segment, स्लो लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 करा है मैंने ये, angles in the same segment। क्या मैं यहां से एक सर्कल बना सकता हूं, कुछ टेढ़ा सा ही बनाऊंगा, रफ ही बना रहा हूं मैं, पता नहीं कहां से पास करेगा, बट मेरे को इतना सा पता है इन सब से तो पास करेगा ही, N से E से A से इन सब जगह से पास करेगा ही, और गुड है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, मेरे को
एंगल n कौन सा, ये वाला एंगल, n भी नहीं लेता, 1 2 यूज किया, मैं एंगल 3 और एंगल b को 90 डिग्री ले सकता। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल b हो जाएगा, क्योंकि एंगल b 90 दिया हुआ था, तो एंगल 3 को मैंने 90 लिख लिया। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसका यूज किया। अभी भी ये 45 पड़ा हुआ है, सिर्फ अभी यहां यूज की है। अब देखो कौन सी उठा रहा हूं, ये थोड़ी टेढ़ी थी, दिख रहा है, यहां से ये 45 यहां दे रहा है, देखो ध्यान से, यहां से ये 45 यहां दे रहा है, देखो उंगलियां कहां चल रही है मेरी, इस जगह पर, और यहीं से ही 45 और नीचे भी दे रहा है, देखा। अब देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, मैंने एंगल को छोड़ू, इसको बोल देता हूं 1 और इसको बोल देता हूं 3 यूज कर चुका हूं, तो इसको ले लेता हूं 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, 45 डिग्री ईच। सेगमेंट देखो कौन सी उठा रहा हूं, सेगमेंट उठाई MF, ठीक है, सेगमेंट उठाई MF। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से, ओ साइक्लिक बोला नहीं था, यहां पे ऊपर भी साइक्लिक बोल देता हूं, कौन सा था साइक्लिक, NE से उठाया था ना, NEDA लिखना चाहिए साइक्लिक, सॉरी ये लिखना भूल गया था मैं। अब सेम चीज मैं यहां लिखूंगा, कौन सा साइक्लिक होगा, M भी होना चाहिए, F भी होना चाहिए, A भी होना चाहिए, D भी होना चाहिए। अब मेरा कुछ सर्कल ऐसा दिखना, ये बाहर को चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा, वो बाहर की तरफ चला गया, कोई चक्कर नहीं है। सर्कल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ए मतलब MF से शुरू किया है तो MF से लिखूंगा, MSDA साइक्लिक दिया मेरे को। अगर ये साइक्लिक है, ये पूरा एंगल कौन सा, 4 में यूज कर चुका हूं, इसको 5 लिख लेता हूं, 5 और D, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होता भाई, तो मैंने एंगल 5 को भी क्या लिख लिया, 90। इससे बेनिफिट यूज करना है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चेंज कर लेते हैं इसको, क्यों गुस्सा आने वाला है तुम्हें। अब अगर तुम देखो ट्राइंगल, देखो कौन सा उठा रहा हूं, AEF, AEF ट्राइंगल, क्या मैं बोल सकता हूं NE, क्योंकि NE बोला था, NE इज ऑल्टीट्यूड, एंड MF, NE बोला था और MF बोला था, MF आर ऑल्टीट्यूड्स। ये दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड्स है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं P इज ऑर्थोसेंटर, P इज ऑर्थोसेंटर, तो मतलब कि P से पास होता हुआ AK भी क्या हो जाएगा, विल बी ऑल्टीट्यूड। तो मतलब कि जो एंगल मैंने मांगा था वो 90 डिग्री था, ये था क्वेश्चन, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 2 3 जगह भी पूरी नहीं चाहिए थी, टाइम इसलिए ज्यादा दिया था कि थिंकिंग बेस्ड था, स्टेप्स थे उसके अंदर, इतना सही था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The quadratic polynomial x square plus ax plus b is factorized into linear factors. Okay, उसको factorize कर दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। P and Q are integers given है भाई, not necessarily distinct, मतलब कि same integers भी हो सकते हैं। A lies between 1 and 150, बाप रे, A की वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है, और B is greater than 0, कुछ भी हो सकता है, B जितना मर्जी बड़ा कर लो। The number of ordered pairs A comma B where A and B are integers be n. n निकालो, then write the value of n by 125, right? तो उसने बोला कि भाई उसको लीनियर फैक्टर्स में लिखना है, तो पहले लिख देते हैं x square plus ax plus b, इसको लीनियर फैक्टर्स में लिखना है x minus p into x minus q, लीनियर फैक्टर्स में लिख लिया।
सो कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया, पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू, राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी क्यू। अब कंपेयर कर देते हैं, ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, राइट, एंड बी की वैल्यू आ गई पी इंटू क्यू, ठीक है, पी क्यू। अब उसने कुछ बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ए लाइज बिटवीन 1 एंड 150, मतलब कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, फुल पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये ए आ गया तो मतलब कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो पी प्लस क्यू हैज टू बी नेगेटिव। चलो पी प्लस क्यू नेगेटिव मिल गया मेरे को। अगर पी प्लस क्यू नेगेटिव है और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी सम नेगेटिव बनेगा, राइट। सो पी इंटू क्यू एक नेगेटिव नंबर इंटू दूसरा नेगेटिव नंबर, तो बी हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। सो मैंने यहां से, ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव है, मतलब कि बिल्कुल ठीक सोचा है। सो पी इंटू क्यू हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। पी प्लस क्यू नेगेटिव नंबर है, पी इंटू क्यू पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मैंने ठीक से चूज कर लिया। आगे चलते हैं, बट आगे चल के कैसे चलें? पी प्लस क्यू के बारे में पता है और पी इंटू क्यू के बारे में पता है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, P plus Q is negative and PQ is positive. सिर्फ इतना पता है मुझे, राइट, और A lies between 1 and 150. 150 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। हाँ, इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है और 150 को भी, ठीक है, केसेस ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो A को अगर मैं 1 ले लूं, ठीक है, A को 1 लिया, P plus Q क्या हो जाएगा? ये कैसे पता चलेगा P प्लस क्यू नेगेटिव? तो मैं एक काम करता हूं, ए को भी लिख लेता हूं। ए इज इक्वल टू किसके बारे में है? ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ P प्लस क्यू, एंड बी के बारे में भी लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू पी क्यू। यही था मेरे पास। सो अगर ए को मैंने 1 ले लिया यहां पे, तो P प्लस क्यू क्या हो जाएगा? -1। अब बोलो, P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एक -1 एक 0, ठीक है, एक इंटीजर्स बोले थे उसने, देखो इंटीजर्स बोले, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। तो मेरे पास सम -1 आ सकता है किसी भी तरह से, P और Q की कोई ऐसी वैल्यू डालू, -1 डालोगे, दोनों नेगेटिव बोलनी है उसने, 0 तो डाल नहीं सकता, तो सम कभी नेगेटिव होगा। यहां से तो कोई केस नहीं। चलो A को 2 डाल के देखते हैं। अगर A को 2 डाला, P प्लस क्यू क्या हो जाएगा? -2। P प्लस क्यू -2, तो P की जगह -1, Q की जगह -1, ठीक है। सो P इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर आ गया मेरे पास 2,1। मेरे को एक सोल्यूशन मिला है, ठीक है। A की जगह मैंने 3 डाल दिया, ठीक है। P प्लस क्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? -3। ओके, सो P को -1 डाला, Q को -2 डाला तो भी चलेगा, P को -2 डाला और Q को -1 डाला तो भी चलेगा, ठीक है। सो B लिखना है PQ से, यहां पे लिख दूंगा इसके आगे, ठीक है, यहां पे नहीं, दो अलग अलग बन रहे हैं। सो -1 इंटू -2 2, और यहां पे भी -1 इंटू -2 इंटू -1। ऑर्डर्ड पेयर कितने बने? एक ही ऑर्डर्ड पेयर बना दोनों केस में, एक ही बना। एक ही जगह मैं 4 डाल देता हूं। अगर 4 डाला तो P प्लस क्यू क्या होना चाहिए? -4। केसेस, P की जगह -1, Q की जगह -3, P की जगह -2, Q की जगह -2, P की जगह -3, Q की जगह -1। यहां से B क्या आएगा? 3, यहां से B क्या आएगा? 4, यहां से B क्या आएगा? 3।
तो मतलब कि मेरे को एक यहां से मिलेगा 4,3 और एक यहां से मिलेगा 4, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। आगे चलो, ए को डाला मैंने 5, कूल। ए को 5 डाला मतलब कि पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई? -5। सो -1 एंड -4 चूज कर सकता हूं, -2 एंड -3 चूज कर सकता हूं, -3 एंड -2 चूज कर सकता हूं, एंड -4 एंड -1 चूज कर सकता हूं, राइट? यहां से बी 4, यहां से बी 6, यहां से बी 6 और यहां से बी 4। ठीक है, तो सिर्फ यहां से 2 मिले मेरे को। ये वाले तो रिपीट हो रहे हैं तो इसको काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही जगह मैंने 6 डाल दिया, सो P प्लस क्यू क्या मिलेगा मुझे? -6। ठीक है, P प्लस क्यू -6 मिला तो -1 -5, -2 -4, -3 -3, -4 -2 एंड -5 -1। यहां से B इज 5, यहां से B इज 8, यहां से B इज 9। अगेन वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, B इज 6, B इज 5। तो यहां से मेरे को कितने मिले? 1, 2 एंड 3 नहीं मिले, राइट? सो एक और करके देख लेते हैं, मेरे को पैटर्न दिख रहा है अब तो। A is 7, P plus Q is equal to -7, right? So -1 -6 -2 -4 -3 -3 नहीं -7 बनाना था ना, तो ये 5 होगा, सॉरी ये 5 होगा, यहां पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे -4 -3 7 बन रहा है यार, ध्यान से। सो -5 -2 एंड -6 राइट? सो एक बी यहां से बना 6, यहां से बी बना मेरे पास 10, यहां से बी बना मेरे पास 12 और यहां से बी बना मेरे पास फिर से 12 एंड सेम आ जाएगा, यहां से काट दिया तो ये 3। ठीक है, सो केसेस देखो, 1 केस 1 केस, 2 केस 2 केस, 3 केस 3 केस। अगर ए 8 डालोगे, ठीक है, और P प्लस क्यू -8 लिखोगे, ठीक है, तो आपके पास 4 केसेस बनेंगे। चेक कर सकते हो, एक काम दे दिया मैंने। नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न चेकआउट कर लेते हैं कि पैटर्न से हम ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, पैटर्न चेकआउट करते हैं। एक ही जगह 2 इज आइदर 2 और 3, मेरे पास इसमें 1 सोल्यूशन आया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहां पे एक सोल्यूशन आया, यहां पे भी एक सोल्यूशन आया। 2 के लिए 1 सोल्यूशन, 3 के लिए भी 1 सोल्यूशन। एक ही जगह मैंने 4 रखा और मैंने 5 रखा, यहां पे 2 सोल्यूशंस आएंगे, यहां पे भी 2 सोल्यूशंस आएंगे। 4 के लिए भी 2, 5 के लिए भी 2। फिर मैंने 6 और 7 रखा, इसके लिए 6 के लिए 3, 7 के लिए भी 3। एक ही जगह 8 मैंने बोला है चेक करने के लिए, कर लो। 9 के लिए भी चेक कर सकते हो, आपको पैटर्न दिख जाएगा, यहां पे 4, यहां पे 4। अगर मैं ऐसे चलता जाऊं, सो A 148 और 149। ठीक है, ये देखो 2 का 1 हो रहा है, 4 का 2 हो रहा है, 6 का 3 हो रहा है, 8 का 4 हो रहा है। ठीक है, और वो सेम उधर आ जाएगा, तो 148 का मेरे पास आ जाएगा सीधा 74, 149 का भी 74। ठीक है, देखो 148 का 74 बना। तो एक ही जगह मैंने रखा 150, सिर्फ एक लेना ही अलग से, दिस इज गोइंग टू बी 75। नाउ ऑल दीज हैज टू बी एडेड। तो ऐड करने के लिए मैंने इस दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को इकट्ठे ऐड किया, दोनों को इकट्ठा किया तो 4 हो गया, इन दोनों को इकट्ठा किया तो मेरे पास आ गया 6, इन दोनों को इकट्ठा किया तो मेरे पास आ गया 8, इन दोनों को इकट्ठा किया तो मेरे पास आ गया 148, और ये वाला आ गया मेरे पास अलग से एक 75। इन सबको ऐड करना है। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 एंड वी गो ऑन टिल 148 + 75, ये अलग से। ठीक है, या तो आप एपी, इट्स अ स्मॉल थिंग, 10th वालों को भी एपी आती है, बट अगर 9th वालों के लिए करें या 8th वालों के लिए करें तो 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स हैं, उनको कॉमन लिया जा सकता है। क्या बन गया? 1 + 2 + 3 + 4 टिल 74 + 75। ठीक है, तो 2 वैसे का वैसे ही रह गया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n × n + 1/2, और ये 74 नेचुरल नंबर्स हैं, 74 × 75/2 + 75, ये कैंसिल हो गया। ठीक
ठीक है, अब मेरे पास बचा 74 इंटू 75 प्लस 75, ठीक है, 75 कॉमन आ रहा है, निकाल लो 75 कॉमन, कैलकुलेशन क्यों करूं, 74 इंटू 75, 74 प्लस 1, दिस विल आल्सो बी 75 इंटू 75, मतलब कि 75 स्क्वायर में निकाल भी सकता हूं, बट निकालना क्या है, दिस इज एन, मेरे को एन नहीं चाहिए, मेरे को एन बाय 125 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं था, मैं सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में रखता हूं और 125 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये देख के रखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है, 25 3 टाइम्स एंड 25 5 टाइम्स, 5 15 टाइम्स, so this is going to be a simple straightforward question. ये वैसे ही होते हैं जैसे 2 मार्कर और 3 मार्कर होते हैं, बट इसमें स्टेप्स तोड़ोगे, आप ये लगा लो 5 मार्कर है, 2 या 3 2 मार्कर से बन जाएगा, ये 2 3 मार्कर से बन जाएगा, ठीक है, वही छोटे छोटे स्टेप्स को आप तोड़ोगे, तोड़ के आगे चलते जाओगे तो आपका 5 मार्कर सॉल्व हो जाएगा. एक्चुअली सच्ची में बताऊं तो 5 मार्कर्स आर लिटिल बिट इजियर देन 3 मार्कर्स, ठीक है, बट मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिंगल स्टेप पे नहीं आएगा. इवन 3 मार्कर कैन बी टफर, बट अगर उसके अंदर एक ही सिंपल सिंगल स्टेप है बट वो काफी टफ स्टेप है तो वो दिखता नहीं है, ठीक है, बट इसके अंदर स्टेप सीधे सीधे होते हैं. आप देखते जाओ, 20 आप 5 मार्कर्स करो 21 से लेके 30 तक, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप तोड़ पाओगे, बट अगर आपने क्वेश्चन को तोड़ लिया, एनालाइज कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ठीक है. सो Right. On to the next one. Now he says that A be the set containing 1, 2, 3, so on till 100. Now he says if number of subsets of A containing 4 elements, that means we only need to talk about subsets which contain 4 elements. So maybe I can have set containing 51, 63, 74 and 98. Cool. Now he says we need 4 element subsets such that the sum of all elements is divisible by 3. Okay, and he says this is alpha, then you need to write the sum of all digits of this number. Basically I need to find alpha, right? Now I need to count number of subsets. In fact, I need to count number of 4 element subsets such that sum of all elements is divisible by 3. Now divisibility by 3, that is coming into the picture. That means I can use the forms of the number. I know any number can either be of the form 3k or 3k plus 1 or 3k plus 2. Right? In these numbers, obviously, some would be of the form 3k, then 3k plus 1, then 3k plus 2. Let me count how many 3k numbers are there of the form 3k. So, first number is 3, then we have 6, then so on we will have 99. Right? This is the number 3k form. Now, if I need to count it, I can say 3 into 1, 3 into 2, and then this is 3 into 33. So, 1, 2, so on to 33, I have 33 numbers. Right? Then 3k plus 1 type. Right? It will obviously start with 1, then I will have 4, and then I will have 97. I need to count this, right? In order to count this, what I can do is I can do this 0, 3, so on till 96, right? Because since gap is 3, what I'll do is I'll reduce the number. Now, the number of numbers over here would be equal to the number of numbers over here, because corresponding to each I'm writing it here, or you can use the AP method, whatever you want to do it. So this is 3 into 0 plus 1, or you know what, just leave it. This is 3 into 1, then I have 3 into 2, and then I have 3 into 32. And additional one number, so again it is 33. Actually, we are forgetting one number, 97 के बाद 100 भी आएगा. Yeah. So this has to be 34 in number actually. Careful. Right. Similarly, you can find how many 3k plus 2 numbers are there. That is obviously I'll start with 2 and then I will end at 98. These will turn out to be 33 in number. Right. Cool. Now the thing is I need to have 4 element subsets. 4 elements such that the sum of all these numbers have to be divisible by 3. Now first case is obviously all of them can be of the form 3k. 3k, 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 3k. Obviously, since each number is of the form 3k, the sum of all of these would be of the form 3k. Right, done? So, 3k, 3k, 3k. Now, the thing is, I'll keep these 3 as constant. You think I can change this? 3k plus 1? The answer is no. Right? Because then the sum is not divisible by 3. Do you think keeping this as constant, I can keep this as 3k plus 2? The answer is no. Because again, the sum is not divisible by 3. So that means
I have exhausted all the cases when I have these three CK. That means this I have exhausted, now I need to change this one. So instead of CK, I can have CK plus 1. Right? Obviously, I will not put 3K over here, right? Because that does not make sense. I can put 3K plus 2. Right? Another case. So I have exhausted all those possibilities where 3K is there and here 3K plus 1 is there. Now, you can say, ma'am, you can put 3K plus 2 over here. And then corresponding to this, you can have 3K plus 1. Mind it, there is no difference between this and this. Why? You can take numbers like 3, 33, and you can take 34 and 35. Or you can take numbers like 3, 33, 35 and 34. Do you think this set is different from this one? Absolutely not. So mind it, these two cases are same. So I will not be writing it. So this is done. Right? So that means I have exhausted all the cases when I have 3K over here. Right? So let me have 3K plus 1 over here. Right? Now next one, obviously I will not put 3K. I can put 3K plus 1. Then I have to put 3K plus 1. Another case. Now, do you think instead of 3K plus 1, I can have 3K plus 2 over here? No. Right? So, I have exhausted this case now. So, 3K as it is, 3K plus 1 as it is, I will change this now. So, let this be 3K plus 2. Now, the thing is, if that is the case here, 3K have to be there. But, this case already counted. So, I will not count it again. Right? So, I have exhausted all the cases when 3K plus 1 is coming over here. So, let me put 3K plus 2 over here. I will not put 3K plus 1. Because already exhausted here, and I can put 3K plus 2, right? Again, not 3K plus 1 because it does not make sense, then 3K plus 2. Another case, right? Now, I have exhausted all the cases when 3K is there. Now, let me change this only. So, let this be 3K plus 1, right? Next, have to be 3K plus 1. Now, the thing is, you can say put 3K plus 1 again. The thing is, then I have to put 3K over here. Right? Already counted. Then you can say put 3K plus 2 over here. Then you need to put 3K plus 2 over here. This is the case that I can do. Right? Now, I have exhausted all of these cases. Now you can say put 3K plus 1 as constant. You will change this. But mind it, now I have established all of these. The rest of this would be repetitions of all of these 5 cases. So that means in total I have 5 different cases. In each of these, if I can find out the number of subsets, I can find the total number of subsets, right? Which is an easy job. Let's see. Now he says first case, when all the 4 numbers are of the form 3K. That means out of these 33, I need to choose 4. That is done in 33C4 way. Done. Second. Now second case, 2 is of the form 3K. 1 is 3K plus 1, 1 is 3K plus 2. Right. First let me choose 3K. Out of these 33, I need to choose 2. So, 33C2. Corresponding to this, I need to choose 3K plus 1 also. So, out of these 34, I need to choose 1. So, that is 34C1 into last 3K plus 2. Out of these 33, I need to choose just 1. So, corresponding to that. So, that is 33. Let me rewrite this again. This was 33C2 into 34C1 into 33C1. Done? Right. 1 3K number, so that means I have 33C1. Now, 3K plus 1 numbers. That means out of these 34, 3 I want. That is 34C3. Here, 33C1 into 33C3. Then here, I have 34C2 into 33C2. Right? In each of the cases, I found out the number of subsets. If I add all of these, I'll get the total number, right? Mind it, I do not want alpha. I want alpha divided by 33 into 8. This actually turns out to be 4951, right? In fact, I want the sum of digits of this number. So if you add the digits, obviously, the answer will turn out to be 90. Alright, on to the next one. He says a 3-digit number is equal to arithmetic mean of all numbers obtained from the given number with the aid of all possible permutations of its digits. Okay, too long a sentence. Let's see. He says a 3-digit number is equal to arithmetic mean of all numbers obtained from the given number.
So any given number is there, and I need to obtain all the number with the aid of all possible permutations of the digits, right? So obviously 3 digits would be there and all the possible permutations which are possible. I will add them up and divide by 6 because that will give me, why divide by 6? Because permutations. Okay, divide by the number of permutations, we'll get down to that. Divide by the number of permutations, that will give me the arithmetic mean and that should be equal to the number itself, right? And he says this includes the identity permutation, that means the number itself also I need to take in the permutation, right? He says write the number of 3-digit numbers possessing this property, right? 3-digit numbers. Now, if you look carefully, I can probably write 9 such numbers like this itself. Right? Just think about it, 3-digit numbers whose permutations I can quickly see. 111. What are the permutations possible? 111, 111. This is the only permutation possible, right? So just one permutation is possible, so the number itself. So 111 is obviously equal to 111. Right? Then I can say 222, then 333, then so on. I can say 999. These 9 numbers, this should have been visible to you, right? These are the 3-digit numbers that satisfy the property. But the question is, are these the only 3-digit numbers or are there more? There might be, so that is why we need to be a little bit careful, right? Now, I am talking about the 3-digit number, so 3-digit number. So let my digits be A, B and C. Right? Now, if I write this in the expanded form, I will have 100A plus 10B plus C. Now, you see that this number should be equal to the arithmetic mean of all the numbers obtained with the aid of all the permutations possible. Now, what are the permutations possible? First is obviously ABC only. Other permutations ACB. Then exhausted is A, so BAC. Then BCA. Then CAB. Then CBA. I have exhausted all the permutations. Now he says the number is equal to arithmetic mean of this. That means this plus this plus this plus. Now, don't add this. Expanded form. Careful. Expanded form. Second, 100A plus 10B plus C. Expanded form. 100A plus 10C plus D. Then expanded form. 100B plus 10A plus C. You know what are the expanded form. So I need to add all these numbers and divide by 6. So अब add करना numbers को तुम्हें पता है यहाँ पे A 100 place पे twice. 10th place पे twice and unit place पे twice. So 200 plus 20 plus 2, that is 222A. Plus same will go with 222 with B plus 222 with C. Whole divided by, because I've added all the numbers, arithmetic mean चाहिए, so I'll divide by how many permutations are there, that is 6. This should be equal to the number itself. So 100A plus 10B plus C. Right? Obviously, I'll cancel out the factor, cross multiply. Ultimately, I'll get 7A is equal to 3B plus 4C. This is the equation that will I get. Right? Mind it that A, B, C, they are digits. Right? They are digits. That means they might vary from 0 to 9. Right? Yes, A cannot be 0, but it's okay. Rest of them, B and C can be 0. So that is okay. Right? So let's just start exhausting it. So B, the least value of B that can be possible, that is 0. Right? And this is, I need 7 into it. So what I can do is, I cannot take C as 1 because that is 4. 4 is definitely not a multiple of 7. Then I cannot take 2. 4 into 2, no. 4 into 3, no. 4 into 4, no. 4 into 5, no. 4 into 6, no. 4 into 7, yes, that is a multiple of 7. So I can take C as 7. Correspondingly, I get A as 4. So 407 is one such number. You can check it out, right? 407 is one such number. You can write all the permutations. So 407 first, 470, then 704, 740, and permutation 047, 074. Add them up, divide by 6, you'll find that it is equal to this itself. Right? Okay, so we've got one such number. So 407, now I can put B as 1, then I can put C as 1. And I can get A as 1. Then I can put A as 1, then I'll put C as 2 and see whether I'll get it or not. So basically
3 plus 4 is okay because I get 7. 3 plus 8 is not okay because I get 11, not a multiple of 7. Then plus 12, 15, not a multiple of 7, so I don't like it. 16, 19 हो जाएगा, not a multiple 11. 3 plus 20, not a multiple of 7. How much is 7? Okay. 24 plus 3, 27, not a multiple of 7. Then 28, 3 plus 28, 31, no. Then 35. Ooh. 35. I get one more. 35 I get, right? So if I take B as 1 and 4 as 8. 32 plus 3, that is 5. I'll get A as 5. So in this manner, you can exhaust it, and probably if I have not made a mistake, 3 plus 32. Yeah. I'll get 1, right? So then you can take B as 2. You'll obviously find 2 that case because we arrived at that. Exhaust all the cases you have to, because if you want the correct answer, you need to. But it's not that much. I think you can do it. You know, just do it like this. It hardly takes 10 seconds to do that. Okay, 30 seconds. Fine. Right. You can find out the total number of numbers, and the answer turns out to be 50. Alright. On to the next one. He says two circles of radii 10 root 2 and 2 root 2 touch each other internally. Okay. So I have one such circle and another such circle. Now radii are given 10 root 2 and 2 root 2. Right? Not bad. Okay. A chord AB of the larger circle touches the smaller circle and forms an angle of 45 degrees with the common tangent. Right? Now obviously common tangent would be like this. This would be common tangent. Right? Now AB is the chord of the bigger circle and it touches the smaller one. So maybe my chord is something like this. Or maybe I should make it more dramatic so that you can see the angles properly. Cool? Right. So it is something like this. Right. So this is my chord AB. And it makes an angle of 45 degree with the common tangent. So that means this angle is 45 degree. Right. Now he says if AB is equal to K, then write the value of this. So basically you need to find the value of AB. Right. Now what is given to you? It is given that the radii is 10 root 2 and radii here is 2 root 2. Right. Okay. Now obviously since I want to find the length of this chord and the center. So I can draw a perpendicular. Right. And obviously this is the radius which is given to me, that is 10 root 2. And I know that perpendicular from center will actually bisect the chord. So instead of finding AB, I will try to find AC. Why? Because that will be the half of AB. So let me try to find out this length. Now in the triangle OCA, I already know that this is 90, this is 10 root 2. If I want to find AC, I need to find OC. Right? If I need to find OC, what can I do? OC. Now let's see. Obviously here it is a tangent, that means I can have 90 degree over here. Also I know common tangent point is there, that means this center and this point of contact, they will be collinear. Right? And this would be 90 degree. Okay. Somehow I have to make use of the fact that this is 45. Right? This is 90, this is 90, this is 45. Can you tell me this angle? This is 135. Now, if this angle is 135, can you say which angle is 45 degrees? Right? Obviously, this angle is 45 degrees. Okay, now wait a second. This is 45, यहाँ पे 95. That means this angle is also 45. Okay, so let me name this point. This point, let that be D, and this point, let that be E. Now, in this triangle O dash D E, can I say that this length is equal to this length? O dash D will be equal to DE. Isosceles triangle is there, right? And O dash D is nothing but the radius of the smaller circle. This is equal to 2 root 2. We'll see where we have to use it, don't worry. Right? Now, what else? Let me just write it. So, this is 2 root 2. This length is also 2 root 2. Okay, what else? Now, this angle is 45, right? This angle is also 45. The red one, I'm not writing it because I don't have space, right? And this angle is also 45, right? So in triangle OCE, I have 245, that means this is isosceles triangle.
right? That means OC will be equal to CE. Interesting. OC will be equal to CE. I am interested in OC. That means OC is equal to CE. Somehow I need to find OE. I need to find OE. अच्छा, मुझे पता कौन सी है? मुझे लेंथ पता है OO dash. What is the length OO dash? Distance between the centers. This entire thing is 10 root 2. This is 2 root 2. That means this is 10 root 2 minus 2 root 2. That is 8 root 2. Right? This entire length, I know. Let me change the marker so you can see it better, probably. Right? Okay. Since I want OE, I need to find out this length. This length. How do we find out this length? Let me see. This length was 2 root 2. This length was 2 root 2. This is 90. This is the hypotenuse basically. Can I find out this length? This will turn out to be, this is 4 into 2, 8. This is 8. 8 plus 8, 16. So that means this length will turn out to be 4. So O dash E turns out to be 4. Now this is 8 root 2. This is 4. That means OE length. That is 8 root 2 minus 4. Right? Done. I know this length. I need to find OC. Why? Because I need to find the length AC. Right? So put this OC as X. This is X. In triangle OCE, just apply Pythagoras theorem and your answer will be there. So, after some calculation. In triangle OCE, you can say this square, which is X square, plus this square, which is X square, so 2X square, is equal to OE whole square. OE is where here. 8 root 2 minus 4 whole square. Right? You can find the value of X square, right? Because when you apply Pythagoras theorem in OCA, you need X square only. So AC square is actually nothing but this square, which is 200, minus OC square, which is X square. Get X square from here, put it here, get the value of AC, double it up, and you will get the value of AB. Then divide it by square root of A plus 2 root 2. It is not that hard. You have to do it. The answer will turn out to be 0, 8. Now he says the chemist has 3 bottles, each containing a mixture of acid and water. Now bottle A contains 40 gram of which 10% is acid. So I have 3 bottles, so A, B, C. Obviously I might write the acid content. Easier for us. Now he says out of 40 grams, 10% is acid. So I can just find 10% of 40, which is 4. So that means 4 grams is my acid. Similarly, 20% is acid. So that is 20% of 50. So I can write that as 10. Then 30% is acid. So 30% of 50 that I can write as 50. Alright. Now he says she uses some of the mixture from each of the bottles to create a mixture with mass 60 grams, of which 25% is acid. So she's getting some out of this, some out of this, some out of this. And in collaborating that she gets 60 grams, out of which 25% is the acid. So that means 25% of this is the acid. So acid amount is nothing but 25% of 60, which is 15. Right? So that means initially how much acid did she have? She had 29 gram acid. She has used 15 gram of acid already. So that means she is left with acid left. That is 40 grams. Right? She says she mixes the remaining contents of the bottles to create a new mixture. Alright. Let K percent be the percentage of acid in the new mixture. Then write the value of 6K by 5. So I need to find out the acid percentage basically. Right? Now acid left is this much. In order to evaluate acid percentage, I need to know how much mixture is there. Now, she says out of this, how much did she have? She had 140 grams, right? Out of 140, she has already utilized 60. That means the remaining mixture is 80 grams. I think problem is done. This is the remaining mixture. This is the acid left. So I just want the acid percentage. So that is nothing but 40 by 80 into 100. This is my K. Just multiply it by 6 by 5 and you will get the answer as 21. Alright. So the next one. A multiplicative partition of a positive integer n greater than or equal to 2 is a way of writing n as product of one or more integers.
right, way of writing product of one or more integers, each greater than 1. Note that we consider positive integer to be a multiplicative partition of itself. That means if I have the number 25, the multiplicative partition 25 would also be there. Right? Also, the order of the factors does not matter. Suppose in a multiplicative partition, 2 into 3 into 5 is there, and 3 into 2 into 5 is there. Now, order does not matter. These are considered to be same. Right? For each positive integer n greater than or equal to 2, define P of n to be the number of partitions possible. Right? Okay, P of n. So, P of 40 is given to you, which is equal to 7. That means number of partitions. That means number of ways of writing 40 as product of one or more integer, that is 7. And he has given that. First one is 40. Right? Second is 2 into 20. Then 4 into 10. Then 5 into 8. Then 2 into 2 into 10. 2 into 4 into 5. Then 2 into 2 into 2 into 5. So you can see that these are 7 in number. So basically you need to write 40 as product of one or more terms. So one product of just one term, product of two terms, product of two, product of two, product of three, product of three, product of 4. In fact, if you notice, he has already given us how to count the cases. Right? Our question is write P of 800. That means you need to count in how many different ways can you write 800 as product of numbers. So my number is 8 now. 800. Right? So let me try to write it. So obviously 800 may the multiplicative partition would have 800. Then you can see first I'll write all the product of two numbers. Right? That means ways in which I can express 800 as product of two numbers. So I can start, that is 2 into 400. Then I can have 4 into 200. Then I can have 5 into 160. Then obviously 6, 7, no, 8, yes, 8 into 100. Then I can have 10 into 80. Then I can have 16 into 20, 16 into 10, no, 16 into 50, of course, right? Then I can have 20 into 40, right? Then I can have 25 into 32, and then I will start repeating it, right? Because 32 into 25, again, ordering does not matter, so I have already written it. So first I wrote product of one term, that is this. Then I wrote product of two terms. Then I can go for product of three terms. Product of three terms, so I can write 2 into 2 into 200, right? Maybe then product of 3. So then I can write 2 into 4. I can take 2 from here. 4 into 100. Then I can take 2 into just 3. 3 you need to write it, right? So 2 I can take, so 8 into 50 and so on. In this way you have to write each and every case. Right? Now you know that the answer lies between 0 and 99. That means there cannot be more cases than 99. Right? Because he directly asks you the number. Right? So, provided you have the concentration, provided you do not miss anyone, provided you do not over calculate, because sometimes you count the cases twice. Provided you don't do that, you will get the answer as 47. You know the method, just write down product of two numbers, product of three numbers, product of four numbers, product of five numbers, and so on.